A moment to say a big thank you to all of you for removing your time today to join us for this very insightful masterclass on private markets in India. But before we do this deep dive, I would like to give you all a glimpse into the last 1 year's journey of Neo Wealth and Asset Management and the team behind it all. Neo was founded in October 2020 as a result of one man's vision to make a sustainable difference in the wealth management industry and meaningfully tilt the scales in favor of the Indian investor. Nitin Jain, founder and chairman of Neo Wealth and Asset Management, has been instrumental in seeding and scaling some of the most prominent wealth, asset management, brokering and treasury businesses in the country. With 20 years of extensive financial market experience, he led the PAG Edelweiss Wealth Management business to grow to a size of 2 lakh crores of AUM, one of the largest in the country. He was also awarded the Global Indian of the Year in 2021 by Asia One. Joining him in his entrepreneurial journey is Hemant Daga, CEO of Neo Asset Management, Varun Bajpai, CEO of Neo Wealth Management, A. Shrikant, CEO of Neo Wealth Partners, and Puneet Jain, CIO of Neo Asset Management. Puneet, in fact, was the only Indian credit investor to be featured in Global Debt magazine, The Private Debt Investor, in 2019. The journey for Neo Wealth and Asset Management from then to now has also been nothing short of extraordinary. Neo started off in October 2020, seeding the multifamily office, asset management, and affordable housing finance businesses. Within 6 months of existence, Neo MFO hit its first milestone by contracting 10,000 crores of assets under advice. On the heels of this achievement, Neo Asset Management launched its flagship fund in the private credit space, raising commitments of over 600 crores in merely the first 3 months of its launch. As we stand here today, I'm extremely proud to be a part of this exponential growth that our organization has witnessed in the year gone by. We are currently a 400 plus member strong team with presence spanning Mumbai, Kolkata, Delhi, and Hyderabad. Now coming to the reason why we all have assembled here today. At Neo, we feel that India has reached a pivotal arc in its economic growth story, offering up broad-reaching and significant investment opportunities. A key component in India's private markets, where unprecedented attention is leading to burgeoning growth and accompanying fruitful prospects. 2 key constituents of private market opportunities are private equity and private debt. The last decade particularly saw the private equity markets coming of age, with PE/VC investments growing at a 19% CAGR rate. Private credit in India is also instrumentally providing unique investment solutions to investors scouring for yields. These are the 2 major themes that we will be covering in this presentation today. And without any further delay, I would like to invite Hemant Daga, the CEO of Neo Asset Management, to take the podium here. Very good evening to all of you, and thanks for taking out this time for the first event of Neo Wealth Partners. And it's truly a pleasure to talk about private markets to all of you. I think this term private markets is new and yet not new. I think all of us in our personal lives in some form or the other have done private market investing. I'm sure आपको याद होगा कि जब आपके बचपन में किसी फ्रेंड को आपने ऐसी क्रेडिट पे पैसे दिए होंगे, तो फाइनली वो भी प्राइवेट मार्केट इन्वेस्टिंग ही है, राइट? I think you gave money to a friend who wanted credit and you assessed him on some terms, right? Intuitively you are doing a check whether this guy is credible, whether this guy has money generating ability to pay you back. When you buy a home, what are you doing? You are investing in private markets, right? You are thinking, is the location good? Is this a good asset? Will it give me a good exit? I think private markets is something which has been in our blood for a long period of time. Private market investing is just putting that in a more formalized manner so that investors can access it. It's a far more diversified pool. Easily accessible हो जाता है, वरना अगर मैं खुद घर खरीदने निकलूं तो कितने घर खरीद लूंगा? अगर मैं खुद लोगों को लोन देने निकलूं तो कितने लोगों को लोन दे दूंगा? I want to find the best private equity investment. How many investments can I make? Maybe 1, 2 as an individual. But if I want to do it through a fund,
I think what are funds doing? Funds are packaging some of these things that we are doing in a simple, accessible format. And that is private market investing. I know it's a heavy term, but in a way, it's a very, very simple term. Sorry, I just realized that I can just move this presentation from there. If you look at this slide, I think this is a very interesting slide. And I'm sure many of you have experienced this. You know, when you talk to your high net worth investors, your clients, I think investors are getting savvy, clients are getting savvy, right? Their demands are changing because they are understanding the market space, we are understanding the market space, the market itself is changing. And you know, when we speak to a lot of high net worth investors over the years, as जैसे आप सब लोगों ने भी किया होगा, I think उनके needs बदल गए हैं. People want less volatility, more absolute returns, unique products, are willing to put money for a slightly longer term also, because investors understand when they put money for a slightly longer term, they can make better returns. And their needs are rapidly changing because customer savviness is going up, market is giving these opportunities. I think 10 years back, there was not an opportunity to invest in such funds. But today there is an opportunity. People are becoming aware. And I think this need is driving customer behavior and customer need. And that is what, when we talk to our investors, is driving the need for alternatives. Alternatives, private markets, keh lijiye, I think these are all same words, whether it's used interchangeably, you know. The other thing I want to highlight, I think in this audience, everybody has sold mutual funds, right? I'm sure everybody is a veteran when it comes to mutual funds. It's very important that customer ke liye na, we understand what is the difference between mutual funds and alternatives, right? Sometimes these terms might just look new, sometimes these terms might just sound, you know, very confusing. But actually at the base of it, all of finance is common sense. And if you see what is a mutual fund, what are traditional assets? Basically traditional asset in mutual fund आपको क्या दे रहा है? It's saying आप mutual fund में पैसे लगाओ, मार्केट ऊपर जाएगा तो इंडेक्स के परफॉर्मेंस पे प्लस माइनस एक x% आपको रिटर्न मिल जाएगा, राइट? म्यूचुअल फंड इफेक्टिवली सेइंग कि इंडेक्स परफॉर्मेंस प्लस माइनस से 2%, प्लस माइनस 3% is what you can expect as an investor. It's basically directly related to markets. It's directly correlated to markets because you are taking a call on the market. अगर मार्केट चला ही नहीं तो शायद आपके रिटर्न्स बनेंगे ही नहीं. And most of the instruments that mutual funds invest in are actually public markets. They are all listed instruments. It's actually just packaged together in a fund. It's like saying I could have bought 10 stocks together. It's just packaged in a mutual fund, right? On the other hand, what are alternatives? And herein lies the beauty of this asset class. Why is this asset class so popular? Why are customers talking about alternatives? जब मैं जाके कोई कस्टमर से मिलता हूँ, आप जाके कोई कस्टमर से मिलते हैं, वो खुद चला के पूछता है, आपने ये फंड ऑफ फंड के बारे में सुना है क्या? आपने प्राइवेट क्रेडिट के बारे में सुना है? And why are customers seeking these questions? Because alternatives give them lower volatility of returns. Absolute returns बन सकते हैं. It's independent sometimes of market direction. Equity markets ऊपर जाए नीचे जाए तो भी शायद आपके पैसे बन सकते हैं over the long term, right? Over 3-4 years, if markets don't deliver anything also, as an investor you can make returns. And that is the beauty of alternatives. It's a mixture of public markets, it's a mixture of private markets. I mean, a fund can go and buy real estate, a fund can go and give equity to a private company. So all these instruments combined together make this asset class very, very unique. You know, it can give you good returns, lower volatility. It can add diversification to portfolios. Otherwise, क्या होता है? म्यूचुअल फंड ले लिया ना तो आपके लिए सिर्फ मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा. I think that is one variable you are exposed to. यहाँ पे क्या है? आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन मिल सकता है. You can get regular cash flows.
you can have returns even if markets stagnate. And that adds diversification to customers' portfolio in the truest sense. This is an interesting slide. I think, when the other thing is, when we speak to investors, we speak to a lot of partners. I think in India, people understand alternatives still in a rather narrow sense. And the world of alternatives is very, very big. It's a large asset class growing at a phenomenal pace globally. What are the 4 strategies in alternatives? जब भी हम ऑल्टरनेटिव सुनते हैं ना, तो हमारे दिमाग में क्या आता है इंडिया में? पीएमएस, राइट? आपके दिमाग में क्या आता होगा? आप ऑल्टरनेटिव सुनते हो तो पीएमएस, एआईएफ, राइट? और उसके बाद इक्विटीज. These are the only 3 things that at least used to come to my mind. पीएमएस कर लो तो ऑल्टरनेटिव हो गया, एआईएफ कर लो तो ऑल्टरनेटिव हो गया, इक्विटी खरीद लो तो ऑल्टरनेटिव हो गया. But the world of alternatives is actually far bigger than this. There are 4 large strategies in alternatives. The first is private credit, right? And we will spend more time talking about that today. What is private credit? बहुत ही simple है. मैं आपको एक example भी देता हूँ. This is something that happened to me in my real life. So there was a very close friend of mine. Just अभी IIM से पास हुआ था, उसकी नौकरी लगी थी, उसने फ्लैट ले लिया था 2 साल बाद. कोविड आया. Unfortunately, he was, asked to leave the job. अब उसको EMI भरना था. बैंक से उसको EMI नहीं मिलता क्योंकि उसकी नौकरी चली गई थी, राइट? उसके पास पैसे नहीं थे, तो उसको शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल फाइनेंस चाहिए था. ये उसको कौन देता? कोई नहीं देता. बट मुझे ये आदमी पसंद, मुझे ये आई न्यू दैट गाय, राइट? कि IIM का है, अच्छी जगह नौकरी करता है, वापस मार्केट खुलेगा तो उसको नौकरी लग जाएगी. सो आई गेव हिम पर्सनल क्रेडिट ऑन अ पर्सनल फ्रंट. And that is the business of private credit. When you are giving credit not to individuals, but you are giving credit to companies, to promoters, to earn returns as interest. So that is one form of alternative investing, the business of private credit. Okay. The other, which we have heard more frequently, is private equity. And this is a field that has evolved in India over the last several years. Actually, last 10-15 साल में प्राइवेट इक्विटी एज अ कॉन्सेप्ट इन इंडिया हैज बिकम वेरी 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 बिग, राइट? एंड मोस्ट ऑफ अस हैव बीन अवेयर ऑफ इट. मोस्ट ऑफ अस हैव इन्वेस्टेड इन दोस फंड्स, एंड माय कलीग Varun will talk more about it. Varun is an expert on private equity markets and he will give you his insights about that. The third is a very interesting strategy, and someday, maybe in the future, once we meet again, we will talk about that also, is real assets. It's not real estate. जब मैं लोगों को बोलता हूँ ना, तो वो real assets को real estate सुन लेते हैं. But real assets, जैसे ये बिल्डिंग है, right? इस बिल्डिंग में टेनेंट्स आते हैं, रेंट देते हैं, हाई क्वालिटी बिल्डिंग है. अब यही रेंट अगर मुझे एज एन इन्वेस्टर मंथली कैश फ्लोज मिल जाए इसके, तो अच्छा होगा ना. मैं तो बहुत हैप्पी हूँ, करेक्ट? आपने एक वेयर हाउस लगाया, वो वेयर हाउस में यू हैव गिवन इट टू Amazon. Amazon is paying you a monthly rent. If that rent I can package and give to our investors, it will be great, right? It's one of the best assets in the world. Long duration, Amazon, brilliant warehouse, good business. You're packaging it and giving to investors. That is the business of real assets. And if you look at the world over, I think a lot of funds are investing in real assets. वो high quality assets खरीदते हैं, चाहे कुछ भी हो, डेटा सेंटर, वेयर हाउस, बिल्डिंग, होटल्स, और उसमें से जो कैश फ्लो आता है ना, वो अपने इन्वेस्टर्स को दे देते हैं. सो दैट इज अनदर टाइप ऑफ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टिंग. देयर इज प्राइवेट क्रेडिट, जहां आप कंपनीज में पैसे डाल रहे हैं. देयर इज प्राइवेट इक्विटी, जहां आप इक्विटी में पैसे डाल रहे हैं. रियल एसेट्स, जहां आप कैश फ्लो को ओन करना चाहते हैं. एंड द फोर्थ इज हेज फंड्स, व्हिच वंस अगेन सम ऑफ अस आर अवेयर ऑफ, which is a mixture of absolute return strategies, long short strategies. Basically, market ऊपर जाए नीचे जाए, you want to make money irrespective of the conditions. So I think a common feature across alternatives is absolute returns, uncorrelated to equity markets, regular cash flows in a lot of strategies, and access to private markets. I think access to private equity. So these are all the facets of alternatives. In fact,
This facet of alternatives, which is private credit, real assets, hedge funds, private equity, धीरे धीरे ये इंडिया में और भी बड़े रूप में आने वाला है, because globally ना ये बहुत बड़ा हो चुका है, and India is a large economy. India is the 5th largest economy in the world. You look at this data, it's mind-boggling. Today, private markets are 17% of the world's AUM. 17%. अगले 5 साल में this will become 20% of the world AUM, right? And it's growing at a rapid pace because the percentages are constantly increasing. So here is an opportunity which is there globally, and इतना बड़ा हो चुका है. 20% of all assets in the world are private assets, and that is the beauty of this asset class, because it can keep growing in size. This is an interesting number. You know, when we were preparing the slide, I was myself amazed at this number. हम सब लोग mutual fund से हैं, right? I think all of us have been part of the mutual fund industry. But look at these numbers. It's staggering. Today, the alternative assets in India, as per SEBI, is 6.5 lakh crore assets. 6.5 lakh crores, right? And what is the assets of all our equity mutual funds? This does not include, you know, arbitrage funds and ETFs and fund of funds. तो वो निकाल के 13 lakh crore. Basically, alternatives are already half of equity mutual funds put together. Everybody in this room will know about equity mutual funds, right? Small cap, large cap, mid cap, fund of fund, international investing. हर आदमी को equity mutual funds के बारे में पता रहेगा. But you look at alternatives, it's a 6.5 lakh crore industry, and we want to educate investors, we want to educate partners about this asset class. It's like saying कि एक ट्रेन चल पड़ी है, 6.5 लाख करोड़ उसमें assets है. It is half the size of the mutual fund industry, and it is now our job as partners to educate our investors about it, because investors are also getting savvy about it, right? And look at the growth. 6 साल पहले this was less than 1 lakh crore. आज 6.5 लाख करोड़ हो गए. This is an asset class which is less talked about, but it's already getting momentum. And this is what investors will demand in the future. This is what, as new wealth partners, we want to showcase to our partners, we want to showcase to investors. इतनी बड़ी opportunity है. अगर दुनिया में 20% of assets है, it is half of our equity mutual fund assets, right? And growing rapidly. So, because equity में क्या है ना, आपको market value का भी benefit मिल रहा है. इसमें market value का भी benefit नहीं है. 6.5 लाख करोड़ मतलब 6.5 लाख करोड़ assets है. So technically, पिछले 6 साल में ना, maybe more assets have got added in alternatives than in equities. I think the sum and substance of all this is, alternatives is a large asset class, friends. I think it is something which is intuitive to all of us. We have all done this in our personal lives in some way or the other. And जब भी कोई नई opportunity आती है ना, तो हमेशा थोड़ा हिचक रहता है. बट मैं बोल रहा हूँ ये नई अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी बहुत बड़ी है, काफी पुरानी भी है, और इट्स एन अपॉर्चुनिटी दैट इंट्यूटिवली वी अंडरस्टैंड. जब आप किसी को ब्याज पे पैसे देते हो, आपको समझ में आता है कि क्या देख के देना चाहिए, राइट? जब आप किसी फ्रेंड को पैसे देते हो कंपनी चलाने के लिए, कंपनी खोलने के लिए, तो आपको पता है आप क्यों दे रहे हो उसको. आई थिंक द सेम सेंस, द सेम लॉजिक वी हैव टू अप्लाई टू प्राइवेट मार्केट इन्वेस्टिंग, एंड इफ वी अप्लाई द सेम प्रिंसिपल्स, I'm sure we will be able to explain it to our clients who will embrace these new opportunities, because it can add, you know, as I said, diversification to their portfolio, and true diversification, not in the sense कि मैंने 10 म्यूचुअल फंड खरीद लिए तो मेरा डाइवर्सिफिकेशन मिल गया. फाइनली तो इक्विटी है. 10 म्यूचुअल फंड खरीदने से आपको डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिलने वाला. आपको डाइवर्सिफिकेशन तभी मिलेगा जब वो एसेट क्लास डिफरेंट है, and it gives you something unique, and that is what alternatives, private markets can give you. So as I said, I think today we want to focus on 2 large asset classes today, and I would love if there are questions in between.
if we can make this more interactive, because this is a new concept, the more we can interact, I think the better it is. We are going to talk about private credit today. We are going to talk about private equity. ये दोनों अपने आप में ना बहुत बड़े asset classes हैं, and that is what we want to focus on. I'm sure sooner or later we will organize more conferences where we can talk about real assets, where we can talk about hedge funds. जैसे आपका कस्टमर चाहता है कि मैं इंडिया के सबसे बड़े warehouses में पैसे लगाऊं, तो we will get those opportunities to customers where they can participate in data centers, where they can participate. Why should only companies own data centers? Why can't individuals own data centers? And that is the opportunity that we will show at the right time. But today is the day for private credit. Today is the day for private equity. Real assets का भी दिन आएगा, hedge funds का भी दिन आएगा. Once again, private credit. नाम थोड़ा फैंसी है, but चीज वैसे बहुत सिंपल है, right? Typically, when a company, any company, if you look at a company's balance sheet, there are two sources of capital. Fundamentally, there is equity and there is debt. हर कंपनी की बैलेंस शीट में, कोई कंपनीज डेट फ्री होते हैं, बट टेक्निकली मोस्टली आपको सारे कंपनीज में डेट भी मिल जाएगा और इक्विटी भी मिल जाएगा. जब कोई कंपनी इक्विटी मार्केट में लिस्ट करता है, वहां से कैपिटल उठाता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? We all participate in IPOs, right? We all participate in stock markets every day. We call that public equities, right? Standardized terms है, exchange पे आया, एकदम standardized terms है, सब लोग एकदम governance rules follow करेंगे. That is called public equities. But मैंने अपने friend को पैसे दिए as equity, उसकी कंपनी चालू होने वाली है. Obviously, he cannot go to a stock exchange now. He cannot get listed. Just कंपनी चालू की. It's on different terms. तो उसको क्या बोलते हैं? Private equity, right? इफेक्टिवली क्या हुआ? इक्विटी के पहले पब्लिक नाम लगा दिया तो स्टॉक एक्सचेंज बन गया. इक्विटी के पहले प्राइवेट लगा दिया तो इफेक्टिवली वी आर गिविंग मनी टू अनलिस्टेड कंपनीज, राइट? वी आर गिविंग मनी ऑन अ one-on-one basis, on a bilateral basis. The public is not participating in it. Nothing else. Similarly, क्रेडिट क्या होता है? मैंने क्या बोला था? हर कंपनी में इक्विटी भी होता है और डेट भी होता है. So now, when a company goes and raises money on NCDs. I'm sure all of you have seen NCDs in your customers' portfolio, have advised customers about NCDs. NCDs क्या होते हैं? It is public debt, right? एक कंपनी जैसे L&T NCD से पैसे उठाता है. So what is it called? It's public debt, right? Terms are uniform. All investors are coming in at the same terms. Everybody knows. It's listed on the exchange. It's absolutely transparent. That is what is called public credit, right? अब इसी को अगर मैं रिप्लेस कर दूं, say Hemant Daga has gone and given money to somebody. As a fund, we have given money to a company. It's a structured deal. It's a bilateral deal. It's very unique. I know your needs. You need money only for 6 months. You will give me exit when an IPO happens. Then what it will be? It will be called private credit. So basically, private credit is also most of us have done, I think a lot of us, if in our generation or at least in our older generation, at least, I come from Calcutta, and there is a ICD market in Calcutta, where you give, ब्याज पे you give people money. तो ये इंडिया में तो सालों से चल ही रहा है, right? I mean, my father used to give ICD money to a lot of people. But वो कैसे होता था? गट पे, मैंने चेहरा अच्छा लगा, तुमको पैसे दे दिए, कोई पेपर वर्क नहीं किया. प्राइवेट क्रेडिट क्या कर रहा है? उसी को फॉर्मलाइज तरीके से ला रहा है. वी आर इवेल्युएटिंग कंपनीज, कैश फ्लो होना चाहिए, कोलैटरल होना चाहिए, अच्छे से पेपर वर्क करेंगे, उसको प्राइवेट क्रेडिट बना के देंगे. एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट क्रेडिट. सो इट्स अ न्यू वर्ड, it's a but in a sense it's bilateral deals, it's one-on-one deals, it's structured in that sense, right? So जैसे प्राइवेट इक्विटी है वैसे ही प्राइवेट क्रेडिट है. This is an interesting statistic. I'm sure all of us know globally credit markets are bigger than equity markets, right? आप कोई भी कंट्री देखिए, आप यूएस देखिए, यूके देखिए, इंडिया, credit markets are bigger than equity markets fundamentally. And world over, actually credit markets have developed earlier than equity markets. India is a unique nation where our equity markets developed first.
बिकॉज एनएससी आ गया था, सेबी आ गया था 95 में, हमारे इक्विटी मार्केट्स बहुत डेवलप हो गए, बट हमारे क्रेडिट मार्केट्स जस्ट पिकअप कर रहे हैं, राइट? सो इंडिया बहुत ही यूनिक कंट्री है, बट अगर आप दुनिया में देखिएगा ना, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फंड्स आर प्राइवेट क्रेडिट फंड्स. They are not equity funds, they are not private equity funds, they are private credit funds. And this is very interesting. It's very intuitive also. अगर asset class ही बड़ा है तो दुनिया के सबसे बड़े funds private credit funds ही हो गए ना. Blackstone का जो private credit fund है ना, which is the world's largest private credit fund, is a $300 billion fund. It is like 60% of अपना LIC का size. एक fund, वो भी सिर्फ private credit करता है और कुछ करता ही नहीं है. That is the size of the world's largest funds. And there is a structural tailwind going. See, कोई भी asset class अगर इतना बड़ा हो जाता है ना, $300 बिलियन के फंड्स, $150 बिलियन, ये बहुत बड़े अमाउंट्स है. $300 बिलियन इज 24 लाख करोड़. LIC का साइज कितना होगा? 40 लाख करोड़. एक फंड 24 लाख करोड़ का, राइट? तो अगर वो इतना बड़ा है, then what is driving it? Structurally, if you see, this is an interesting thing. It just shows increasingly every year. 94 में जब लोन्स आते थे, बैंक्स कितना देते थे? 72%. प्राइवेट कितना पार्टिसिपेशन होता था? 28%. वही चीज 2020 में देखिए, बैंक्स कितना देते हैं? Every primary market loan that comes, banks are only participating 14%. How much are private market players participating? 85% incrementally. And this is a staggering statistic. हमको क्या लगता है कि कुछ भी क्रेडिट होता है ना तो बैंक को करना चाहिए. But wave, the world, the wave is a lot of banks are receding from structured wholesale lending. Why is it happening? Because जो regulator है ना, after the Lehman crisis, after the global financial crisis, after the East Asian crisis, I think each of the regulators have realized that the banking system credit has been sometimes misused, has been sometimes misutilized, and they want banks to be very, very tightly regulated organizations. Retail lending करो, trade finance facilitate करो, wholesale lending करो, largely to AAA corporates. तो जो ये primary market lending है, वो कहाँ करेंगे? कौन करेगा? Asset managers will do it. That is why Blackstone is $260 billion. That is why Oaktree का आप लोगों ने सबने नाम सुना होगा, right? Howard Marks, I'm sure all of you have read his memos. Somebody as legendary as Warren Buffett, he runs the world's third largest private credit fund. And there is a structural tailwind blowing behind this because banks are increasingly receding. And this is happening in India also. This is a very important slide, just absorb it for 15 seconds. Over the last several years, हमको क्या लगता है कि सिर्फ equity में पैसे बनते हैं, right? Sometimes हमको लगता है कि equity में पैसे डालो तो equity में पैसे बन जाएंगे. Definitely बनता है as an asset class. It's a great asset class. या debt में पैसे डालो तो simple debt में पैसे बनते हैं. But look at this returns. This is in US markets. Credit markets are mature, credit markets are super developed, right? How much has S&P delivered over the last many years? This is in dollar terms, 8% dollar returns over the last several years compounded, right? And S&P, friends, believe me, is the world's only second market which has consistently delivered these returns. There are only two markets in the world which have delivered consistent equity returns. S&P and कुछ तो गेस करो. यस, अपना इंडिया. आई थिंक दुनिया के सिर्फ दो ही मार्केट्स ने रिटर्न्स जनरेट किए इक्विटी में. तो ऐसा नहीं है कि इक्विटी से रिटर्न आना जरूरी चीज है, सिर्फ दो ही मार्केट्स. S&P has generated 8% returns compounded over the last several years. How much has private debt generated? चलिए forget the top 25 funds. Let's just forget, right? Even the average fund has generated 10% dollar returns. Even the average fund, the bottom fund has also generated 8% dollar returns. This is staggering. It's mind blowing. This adds value to your debt allocation. Now, what are the types of strategies?
At the core, now once again these are some fancy terms, you know, senior structures जो बहुत safe होते हैं, senior secured मतलब एकदम safe, right? Special situations मतलब कुछ unique situation है, वहां पे मैं पैसे देके पैसे बनाऊंगा. So for example, एक कंपनी का IPO आने वाला है. Promoter wants to give exit to the private equity partners, right? He wants to do an IPO. Suddenly market 30% down हो गया. It can happen, right? What will he do? जब मार्केट 30% डाउन जाता है, कोई भी आईपीओ आता है तो वो अपना आईपीओ पोस्टपोन कर देगा. तो जब वो अपनी आईपीओ पोस्टपोन करेगा, उसके प्राइवेट इक्विटी वाले आके बोलेंगे मुझे तो एग्जिट दो, हमने तो डिसाइड कर लिया था ना मुझे एग्जिट चाहिए. तो वो कहां से एग्जिट देगा? ही रिक्वायर्स ब्रिज फाइनेंसिंग. वो हम जैसे लोगों से पैसे लेगा प्राइवेट क्रेडिट में, उसको एग्जिट देगा, और हमको फाइनली कब एग्जिट देगा? जब कंपनी की आईपीओ आ जाएगी. तो इसको बोल, these are some situations which lend themselves to private credit, because बैंक से पैसे लेके अपने प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स को एग्जिट नहीं दे सकता. So private credit has different types of opportunities. Senior secured opportunities, right? जहां आदमी का 12 से 16% ब्याज में बन सकता है on an estimated basis. Then there is performing credit. अच्छी कंपनी है, अच्छा सिचुएशन है, कैश फ्लो बना रहा है, कोलैटरल है, सब कुछ है, उसको पैसे चाहिए फॉर सम यूनिक रीजन. जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, प्राइवेट इक्विटी वाले को एग्जिट देना है, तो उसके लिए पैसे चाहिए, राइट? तो कहां से पैसे आएंगे? प्राइवेट इन्वेस्टर से, प्राइवेट क्रेडिट से. उसमें कितने पैसे बन सकते हैं? 16 से 20% रिटर्न्स, right? And then there are some very very unique situations. There are special situations where I will take you through some examples very briefly today, so that you get a sense of the type of opportunities in this market. Because only when you see some examples, it will become more tangible. Otherwise, सब कुछ हवा में रहेगा. See, the other good thing about the business of credit is, credit fortunately is a simple maths business. हर आदमी को समझ में आएगा कि बेसिकली धंधा ठीक है, मुझे पैसा देना चाहिए, नहीं देना चाहिए. इक्विटी समटाइम्स कैन बिकम क्रिस्टल गेजिंग ऑल्सो, बट क्रेडिट क्या है? सिंपल मैथमेटिक्स. यू विल नो कि हाँ इसको देना चाहिए, नहीं देना चाहिए. आई थिंक 10 people in a room, 8 people will at least lead to the same conclusion. So basically the field of private credit has multiple opportunities, starting from 12% से लेके 24%. ये नहीं है कि सब चीज हाई रिस्क है. I think every situation comes with a unique dimension, and every situation needs to be priced that way. अगर मैं एकदम सीनियर हूं डेट में, राइट, इक्विटी के भी ऊपर खड़ा हूं, डेट में भी ऊपर खड़ा हूं, तो ऑब्वियसली मुझे 13% ही रिटर्न बनना चाहिए. अगर मैंने कोई स्पेशल सिचुएशन सॉल्व किया तो फिर मुझे 20% रिटर्न बनना चाहिए. एंड द अदर गुड थिंग इज, इंडिया में ना ये 50,000 करोड़ की अपॉर्चुनिटी है आज के दिन में. You know how much money is chasing this, friends? Any guesses again? कोई भी अपॉर्चुनिटी में फाइनली एडवांटेज कब होता है? When opportunity is bigger and money chasing it is lesser, right? So how big is the opportunity? 50,000 crores. How much is the money chasing it? 20,000 crores. So technically, when you are giving loan, when you are giving credit, you will have an upper hand. You will get a premium when you are doing this business. I'm not sure whether the fonts are visible behind, but very very briefly, you know, just to make this a little tangible, and I will keep it very brief. We can obviously do detailed conversations one-on-one in one-on-one meetings, but very very briefly, the idea is also to give you a sense of some of the opportunities that are there, and for you to appreciate. And I keep telling to people, you know, high risk and high return necessarily don't go hand in hand. I think जब भी हम risk सुनते हैं ना, high return, तो हमारे दिमाग में high risk आता है. Yes, there is risk, but sometimes, you know, high return can also go with high perceived risk. It's actually, the risk might be lower, the return is higher than it. And those are the opportunities as a private credit asset manager that we want to showcase. जब निफ्टी 7,500 पे था कोविड में, तो क्या रिस्क हाई था क्या? मैं हाइंडसाइट में ही बोल रहा हूं. 7,500 पे रिस्क हाई था? चलिए हाइंडसाइट में तो बोल सकते हैं अभी रिस्क लो था, बट उस समय क्या था? परसीव्ड रिस्क बहुत हाई था. तो परसीव्ड रिस्क हाई था, मगर रिटर्न्स कितने बने?
20% कंपाउंडेड बन गए। तो जरूरी नहीं है कि जब रिस्क हाई है तभी रिटर्न हाई है, समटाइम्स परसीव्ड रिस्क कैन आल्सो बी हाई। एंड फॉर इन्वेस्टर्स व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज, सी टिपिकली क्या होता है ना, जैसे ही मैं 20% सुनता हूं ना ब्याज के धंधे में, तो पहले थोड़ा धुक धुक हो जाता है कि क्या चल रहा है, ठीक है ना, पैसे वापस आएंगे ना, सबसे पहले आदमी यही सोचता है, राइट? बट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट आर यू गेटिंग इनटू। I think when you understand the risk, when you peel the onion, that is when true value gets added. At 7,500 निफ्टी जो आदमी दिमाग लगा के ये बोलेगा कि ये कंपनी सस्टेनेबल है, 30 साल की कंपनी है, 20 साल की कंपनी है, गायब तो नहीं हो जाएगी, जो आदमी इतना बेसिक एनालिसिस करके पैसे डालेगा उसी के पैसे बनेंगे। So ये opportunities भी ना rocket science नहीं है। As I said, credit is a very simple business. It's a business based on numbers. Believe me, put 10 people in a room, 8 people will give you the same answer. In equities, put 10 people in a room, you will get completely divided opinions, right? Somebody will like the business, somebody will not like the business, but in credit, it's relatively simple. So maybe I'll just take another 10 minutes and then I'll hand it over to Varun for a more exciting session on private equity. Credit thoda boring business hai, but you know our nature is to be boring because we are conservative by nature. So this is an opportunity that was a real life opportunity. All the opportunities on this slide are real life opportunities. There is no number on this slide which is not real. So ये opportunity क्या थी? And my colleague Puneet, who is our CIO and founding member, is the master architect of this opportunity. In fact, he was the one who designed such opportunities in India. तो एक company थी. It had taken 650 crores as loan from a NBFC. This was a real estate developer. He took 650 crores of loan. Just remember a few numbers. I'm hoping it doesn't get heavy. 650 crores का उसने लोन लिया था. अब कोविड आया था, राइट? डेवलपर ग्रेड ए है, कोविड आया, उसके सेल्स थोड़े स्लो हो गए. इट्स वेरी नेचुरल, राइट? कोविड में सेल्स स्लो होना. तो उसको पेमेंट करना था एनबीएफसी को, उसके पास पैसे नहीं थे, राइट? सो व्हाट डिड वी डू? I mean, the opportunity that was there, and he had great. I mean, he had OC received, plotted land, all OC received. सारे approvals आ गए थे उसके पास. उसके पास कितना collateral था? 2000 करोड़ का. बट उसका माल उस समय नहीं बिक रहा था क्योंकि कोविड था, कस्टमर आ नहीं रहा था. उसके पास collateral कितना था? 2000 करोड़ का OC received collateral था. रिस्क भी नहीं था, सारे approvals आ गए थे. प्लस वो कितना जमीन लेके बैठा था? और 1500 करोड़ का. अब इसमें क्या अपॉर्चुनिटी आई? उसको ब्रिज फाइनेंसिंग चाहिए था. अगर उसको कल बोलते कि अच्छा 650 करोड़ रुपए चुका दो, तो नहीं चुका सकता ना. अभी कोविड आ गया है, सेल्स नहीं हो रहा है, तो मैं नहीं चुका सकता. अब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है. बट अगर तुम मुझे टाइम दोगे, तो मुझे 12 महीने की लिक्विडिटी दोगे, मुझे 18 महीने का 7 महीने का टाइम दोगे, तो मैं पैसे चुका दूंगा. अब इसमें हमने क्या किया? उसको ब्याज पे जाके पैसे दिए. हाउ मच डिड वी गिव? एनबीएफसी का 650 करोड़ था, 550 करोड़ उसको डेट दिया, राइट? उसने उसमें से एनबीएफसी को 350 करोड़ चुका दिए. तो एनबीएफसी भी एक बार खुश हो गया. एनबीएफसी के कितने बचे? 300 बचे. तो जैसे मैंने आपको बोला ना, वी बिकेम सीनियर. 550 नीचे एनबीएफसी 300. अब टोटल डेट कितना हुआ? 850 करोड़. इफ यू वांट मी टू रिपीट, आई एम हैप्पी टू रिपीट द नंबर्स. टोटल डेट हुआ 850. ऊपर कितना है? 550. हम लोग कहां हैं? ऊपर 550 पे. इसको क्या बोलते हैं? सीनियर सिक्योर्ड. थोड़ा फैंसी वर्ड है बट सीनियर है, राइट? अब 550 के नीचे कितना कोलैटरल है? क्योंकि हम तो सीनियर है, अपने को जूनियर से क्या लेना देना. 550 के नीचे कोलैटरल कितना है? 2000 करोड़ का ओसी रिसीव्ड प्लॉटेड लैंड्स इन अ सिटी कॉल्ड बैंगलोर, where plotted lands sell like hot cakes. तो 550 करोड़ के नीचे आपके पास 2000 करोड़ का प्लॉटेड लैंड्स, अपार्टमेंट्स, ओसी रेडी, कोई अप्रूवल की स्ट्रेस नहीं है, राइट? और उसके साथ कोलैटरल कितना है? ओवर एंड अबव दिस 2000 करोड़ का तो ओसी रिसीव्ड माल है, उसको छोड़ के 1500 करोड़ का लैंड भी है. अब ये डील आप करोगे सर? कोई भी करेगा? 550 करोड़ रुपया देना है, 2000 करोड़ ओसी रिसीव्ड माल है, महीने का कलेक्शन आने वाला है, राइट? आप करोगे ना ये काम? I'll explain why a bank can't do it. It's a very good question. But fundamentally, let us answer the question first.
आप करोगे क्या इसको? राइट? जैसे सर ने कहा आंख बंद करके करूंगा। तो जब पुनीत भी ये डील लेके आया था ना, पुनीत हमको समझा रहा था, मैंने भी पुनीत को बोला था ये तो आंख बंद करके करना चाहिए, राइट? ऑब्वियसली he presented in a simpler manner and I have the beauty or opportunity to present to you in a simpler manner. 550 करोड़ के नीचे 3,500 करोड़ का बफर है और हर महीना माल बिकने वाला है, हर महीना लैंड बिकने वाले हैं। कितना लैंड बिक रहा है? यू नो दिस गाय पेड अस बैक इन 15 मंथ्स। जैसी कोविड ठीक हुआ, रियल एस्टेट के सेल्स ऑल ऑफ अस नो हैव गॉन थ्रू द रूफ, राइट? रियल एस्टेट प्राइसेस हैव गॉन थ्रू द रूफ। हर महीना वो 50 करोड़ का माल बेचता है। उसने 15 महीने में पूरे के पूरे पैसे ही चुका दिए। उसको बस ब्रीदर चाहिए था, क्योंकि उस समय क्या हो गया था, कोविड में ही वाज चोक्ड। बट ब्यूटीफुल एसेट, ओसी रेडी, हमने सीनियर सिक्योर दिया। कितना ब्याज कमाया? 23%। 23% IRR, 23%। मैंने क्या बोला, कभी कभी सुनने में क्या लगता है, रिस्क, बट रिस्क जरूरी नहीं है। And that is what we need to embrace. Whenever a new opportunity comes ना, आदमी का पहला रिएक्शन क्या होता है? Our brain is wired like that, right? कुछ भी नया है तो छोड़ दे यार, अच्छा नहीं है, 20% रिस्की है, भूल जाओ। बट इसको एम्ब्रेस करो, राइट? अब आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, why can't bank do it? So typically there are two reasons in this case, you know, which is why it comes to private markets. And these are very nuances, but we will explain them maybe in another deeper session. But just to highlight in this case, banks don't give last mile financing for real estate in general. Okay? Last mile financing in real estate banks देते नहीं है। दूसरा रीजन क्या है? NBFC के पास लोन था। बैंक्स टिपिकली ना NBFC को एग्जिट देने के लिए पैसे नहीं देते हैं, राइट? उसका तो प्रॉब्लम होने वाला था, तो बैंक उसको एग्जिट देने के लिए पैसे नहीं देने वाला था। दूसरा, बैंक्स टिपिकली रियल एस्टेट में लास्ट माइल फाइनेंसिंग करते नहीं है। सो सॉरी, 100% अदर NBFCs could have done it, other funds could have done it, बट मुद्दे की बात क्या है? साल की 50,000 करोड़ की अपॉर्चुनिटी है, कैपिटल कितना चेज कर रहा है? 20,000 करोड़। सो नेट अपॉर्चुनिटी इज बिगर देन सप्लाई ऑफ मनी, right? Can other people do it? 100%. Can Neo do it? 100%. Can Kotak go and do it? 100%. But is this opportunity available for investors? Today the idea is to showcase this opportunity all of you. कि इस तरीके की opportunities भी आते हैं मार्केट में, जहां investors participate कर सकते हैं, and through a fund, you know, where you get a diversified pool, you will get 20 such opportunities. Today the objective is just to give you a flavor, to leave you with a thought कि अच्छा एसेट क्लास है, बड़ा एसेट क्लास है, इंटरेस्टिंग रिटर्न्स बनते हैं, सुपीरियर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स बनते हैं, कैश फ्लोज है, कोलैटरल है, ठीक काम है। आई थिंक दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडे। This is a real life opportunity as we sit today. This is a real life opportunity. Our team has signed this term sheet also. I can't name the company, that's why. It's an unlisted company. बहुत ही ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी है। आप इसको सुनिएगा ना तो मतलब लगेगा कि आई वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस। कंपनी 25 साल से है, अनलिस्टेड कंपनी है, स्पेशलिटी केमिकल्स के बिजनेस में है, 1700-1500 करोड़ रेवेन्यू बनाता है, 150 करोड़ एबिटा बनाता है, और उसके बुक में हार्डली 50-60 करोड़ का डेट है, वो भी वर्किंग कैपिटल, तो ऑलमोस्ट डेट फ्री। अब इसमें अपॉर्चुनिटी क्या है? प्रमोटर ओन 70%, 30% इज ओन्ड बाय अ प्राइवेट इक्विटी फंड, राइट? प्राइवेट इक्विटी फंड का लाइफ हैज कम टू एन एंड। जब किसी भी फंड का लाइफ खत्म हो जाता है तो फंड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इन्वेस्टर्स को पैसे लौटाने पड़ेगा, राइट? फंड का लाइफ खत्म हो गया तो इन्वेस्टर्स को पैसे लौटाने पड़ेंगे। तो प्राइवेट इक्विटी फंड क्या ढूंढ रहा है? इट्स लुकिंग फॉर अ एग्जिट, बिकॉज इन्वेस्टर्स को पैसे लौटाने हैं, दैट इज प्रायोरिटी नंबर 1, राइट? अब प्रमोटर्स क्या कर रहे हैं? Obviously, the private equity fund has made some money, but for them right now, exit is the most important decision. Promoter is looking to give an exit to the private equity fund. तो वो क्या कर रहा है? Effectively 450 करोड़ का स्टेक 200 करोड़ में खरीद रहा है, बेसिकली उसको एग्जिट दे रहा है। अब उसको इसके लिए पैसे चाहिए, जैसे मैंने आपको बोला था ना, ब्रिज फाइनेंसिंग चाहिए। कोई बैंक, सर जैसे आपने पूछा था प्रीवियस क्वेश्चन में, बैंक प्रमोटर को खुद की इक्विटी खरीदने के लिए ना पैसे नहीं देगा। No bank gives money to a promoter to buy his own equity. And these are all the instances of private credit. Through these examples, ऐसे बहुत सारे instances आते हैं। तो इसमें प्रमोटर 130 करोड़ रुपया लेगा,
अपना इक्विटी खरीद लेगा, he will own the company 100% and he will give us an exit how? कंपनी में कैश फ्लोज है ना, उसी की कंपनी है, 150 करोड़ साल का बना रही है, 20% ब्याज, 20% on 150 करोड़ is how much? 30 करोड़ ब्याज आराम से कंपनी के कैश फ्लो से भर देगा, प्रिंसिपल भी कंपनी के कैश फ्लो से आराम से चुका देगा. So effectively, this is a unique situation. You are giving bridge financing to a liquidity event. अगर मैं उसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स इंग्लिश में बोल रहा था तो मैंने ब्रिज फाइनेंस किया फॉर अ लिक्विडिटी इवेंट, और कुछ भी नहीं दिया, मैंने 18 महीने का उसको ब्रिज फाइनेंस किया. वो आज अपना माल खरीद रहा है, 18 महीने बाद मुझे पैसे चुका देगा कंपनी के कैश फ्लो से, या आईपीओ करेगा वहां से पैसे चुका देगा. बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जस्ट लुक एट द स्टैटिस्टिक्स. डेट क्या है कंपनी में, हमने 130 करोड़ दिया, इसका साल का प्रॉफिट कितना है, एबिटा 150 करोड़ एबिटा, इट्स नॉट बैड. कोलैटरल कवर 450 करोड़, अनलिस्टेड है, चलो उसको थोड़ा हेयरकट दे देंगे 300 करोड़, तो भी 2 टाइम्स कोलैटरल कवर, और ब्याज कितना बनेगा 19 से 21%. एंड ब्यूटी क्या है, बीच में कैश फ्लोज आते रहेंगे, ब्याज का काम है तो अपने को कैश फ्लो भी लेने का है, तो अपने को बीच में अपने पॉकेट में कैश फ्लोज भी आते रहेंगे. एंड दैट इज द n नंबर ऑफ सिचुएशंस दैट प्रेजेंट इन दिस बिजनेस ऑफ प्राइवेट क्रेडिट. So I can go examples after examples after examples. This is one more example. This is an investment that our team has already done. It's a 5-star hotel in Ahmedabad. It is run by ITC. There was a special situation. जैसे मैंने समझाया, special situation में 20 से 24% रिटर्न बन सकता है. 5-star hotel, ITC, fully constructed. अगर आप लोग अहमदाबाद गए, साबरमती रिवर पे है, यूनिक सिचुएशन था. क्यों बैंक नहीं दे सकता था वो आपको कभी डिटेल में समझाऊंगा. बट बेसिकली 20.5% पे हमने पैसे दिए उसको. अपना ब्याज कहां से आएगा, सिंपल रूल, ब्याज मतलब कंपनी के कैश फ्लोज, कैश फ्लो का धंधा है अपना. और उसके बाद अगर कुछ हुआ तो अपने पास क्या है, रात को सोने के लिए शांति से कोलैटरल भी है, पूरा होटल इज अ कोलैटरल. सो दीज आर द अपॉर्चुनिटीज ऑफ प्राइवेट क्रेडिट. इट इज अ वास्ट फील्ड, it is a field which is enormous, the situations are unique, and that's why you see globally वो क्यों 10% रिटर्न डिलीवर करते हैं मीडियन फंड, बिकॉज अपॉर्चुनिटी यूनिक है. और इंडिया में ना we have just started this opportunity in India, you know, where as I said, fundamentally कोई भी मार्केट में जहां 50,000 करोड़ का डिमांड है और 20,000 करोड़ का कैपिटल चेस करता है, I think that is a market we have to embrace. It is like saying options trading 12 साल पहले जब कोई नहीं देख रहा था, आजकल सब लोग options trading देखते हैं. जब इक्विटी मार्केट 2003 में मारुति का आईपीओ आ रहा था, जिसने मारुति के आईपीओ में डाला उसके पैसे छप गए, राइट? आई एम श्योर ऑल ऑफ यू रिमेंबर मारुति आईपीओ, राइट? That was the first IPO in this country which catapulted IPOs. पूरा limelight उसके चलते आया. So what are we doing as Neo? Today the idea was to showcase the private credit opportunity to you, friends. I think it's a big opportunity. It's a train which is there. It's already moving. We need to get onto the train. It's an opportunity which is simple to understand, which has a lot of safety. It's a simple opportunity. कैश फ्लो चाहिए अपने को, ब्याज कंपनी के कैश फ्लो से चाहिए, और ऊपर से कोलैटरल भी चाहिए, इन अ नटशेल. एंड दिस इज व्हाट वी वांट टू शोकेस टू इन्वेस्टर्स. So as I said, I think there are obviously many funds in the country which showcase this opportunity. But with all humbleness, I must say that the team at Neo is one of the team that specializes in this field. I think between Nitin Jain, Varun Vajpayee, Puneet Jain, Sandeep Khemka, myself, I think we have got people who have done this for 10 साल. 10 साल से हमने प्राइवेट क्रेडिट किया है इंडिया में. इनफैक्ट संदीप खेमका, who's our colleague here, he started private credit in India when probably the asset class did not start. So he got onto the train slightly early. But this is experience that Neo gets. And we want to showcase this opportunity to investors. ये जो अपॉर्चुनिटी है, लाइक आईटीसी अहमदाबाद होटल, ये डील हम कर चुके हैं. सो वी हैव ऑलरेडी डन 2 डील्स. 1000 करोड़ का फंड हमने इकट्ठा कर लिया है पिछले 4 महीने में. व्हाट इज अ फंड कॉल्ड? नियो स्पेशल क्रेडिट अपॉर्चुनिटीज फंड. इट इज अ कैटेगरी 2 AIF, सेबी रजिस्टर्ड है, KPMG हमारा ऑडिटर है, ICICI बैंक कस्टोडियन है. इट्स अ सेबी रजिस्टर्ड फंड. दिस इज द अपॉर्चुनिटी. प्राइवेट क्रेडिट 15 से 20 कंपनी में पैसे लगाए गए. हर कंपनी क्या है,
इट्स लाइक सेइंग मैंने आपको 1 करोड़ रुपए दिए एआईएफ में, हेमंत इफेक्टिवली तुम 5 लाख 7 लाख 6 लाख हर कंपनी में लगा रहे हो, हर कंपनी में कैश फ्लो भी है, हर कंपनी में कोलैटरल भी है, प्लस अपने को डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिल रहा है. सो आवर कोर फिलॉसफी इज EBITDA पॉजिटिव, कैश फ्लो होना चाहिए, कोलैटरल होना चाहिए एंड डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए. दिस इज अ यूनिक अपॉर्चुनिटी. It is an opportunity when we speak to our HNI customers, our HNI friends. The response we are getting, when we started this strategy, we are surprised ourselves. It's a very heartwarming response. Customer चाहता है कि वो participate करे, and we also would love that more and more customers participate. It is like SIP of Indian private credit. I think उसको हमको momentum देना है. अब SIP तो नहीं हो सकता, बट जब डोमेस्टिक पैसा आएगा ना, आई थिंक जब हमारा इंडिया का पैसा आएगा प्राइवेट क्रेडिट में, आई थिंक दैट इज व्हाट वी वांट टू ट्रिगर एट नियो. नियो वांट्स टू स्टैंड फॉर दैट. वी वांट टू गेट आवर मनी, आवर कंट्रीज मनी इनटू दिस एसेट क्लास, बिकॉज हमको पैसा निकालना है, हमको एफडी से पैसा निकालना है, हमको 6% 7% रिटर्न से पैसे निकाल के ये स्ट्रेटजीज में डालना है, बिकॉज ये बहुत बड़ा एसेट क्लास है. एंड दिस इज व्हाट वी वुड लव टू पार्टनर विद ऑल ऑफ यू एज Neo Wealth partners. This opportunity we want to showcase to each and every customer, because मेरा तो मानना है हर कस्टमर का डेट पोर्टफोलियो ना, उसमें प्राइवेट क्रेडिट तो होना ही चाहिए. हर कस्टमर के डेट पोर्टफोलियो में प्राइवेट क्रेडिट इज अ मस्ट, एंड definitely Neo is probably one of the best places to showcase that. So with that, I hope it's been a very long talk. I would have loved if we could have been more interactive and closer, but ये थोड़ा stage and this distance doesn't help. Happy to interact with you over dinner, answer more questions. It's a very interesting space, and I would love and encourage all of you, to come down to our office. We are very close by at Lower Parel. Come down to our office, interact with us, interact with our team. इतने सारे case studies है. It's a very interesting field, and it's an interesting field to showcase to customers because पैसे भी बच सकते हैं. So with that, I will now leave it to the second half of this journey. Yes, sir. Hello. Yeah. See, myself Pankaj Kapadia, and I am amongst those distributors, mutual fund distributors. Hello. Now we had this credit risk fund, and what I see is for past 5 years, none of them have delivered even double-digit returns. They were regulated. Lot of things happened. Lot of there were Franklin fiasco, but they have not delivered. So how could you ensure that this kind of return without any accident would happen? So fundamentally, we have to get to the issue at hand. Have credit risk funds not delivered in the last 3-4 years? Maybe the answer is yes. Okay. Was Franklin a fiasco? Yes and no, because finally the सारा principle आ गया. But most importantly क्या है ना, आपको समझना पड़ेगा, एक म्यूचुअल फंड में जब आप क्रेडिट रिस्क फंड में पैसे लगाते हो, इट्स लाइक सेइंग, अच्छा आप 10 लोगों ने म्यूचुअल फंड को पैसे दिए, उसने जाके आईटीसी होटल को पैसे दे दिए, कोई गलती नहीं की, 4 साल का पैसा दे दिया. अब कल कोविड आ गया, आपको पैसे चाहिए, आप 10 लोगों को पैसे चाहिए, तो आप क्या करोगे? म्यूचुअल फंड पे नॉक करोगे, रिडेम्पशन मारो. अब आपने रिडेम्पशन मार दिया, तो मैं तो जाके वो होटल से क्रेडिट से निकल नहीं सकता ना, उसको तो मैंने 4 साल के पैसे दिए. तो जब मैंने 4 साल का पैसा दिया और आपसे ओवरनाइट पैसा लिया, तो इसको क्या बोलते हैं? एसेट लायबिलिटी मिसमैच. जस्ट गिव मी 2 minutes. सो टेक्निकली एज अ व्हीकल, mutual fund as a vehicle is not suited for doing structured credit, which is why alternative asset managers are doing this both in India and globally. जैसे जब हम जो भी क्रेडिट फंड चलाते थे, जैसे पुनीत, मैं, नितिन, जो भी क्रेडिट फंड चलाते थे, उसमें 22% रिटर्न बना है, 20% रिटर्न बना है. कोटक जो फंड चलाता है, कोटक एक्चुअली रन्स वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट क्रेडिट फंड्स इन दिस कंट्री. इट रन्स इट फॉर द मिडिल ईस्ट पेंशन फंड्स, राइट? आरडीआ के लिए रन करता है. आरडीआ का नाम सुना आप सब लोगों ने? कोटक रन्स अ प्राइवेट क्रेडिट फंड फॉर आरडीआ. 20-22% रिटर्न डिलीवर किया है. सर बहुत इंपॉर्टेंट है क्रेडिट में ना कि आपका एसेट लायबिलिटी मैच्ड हो, right? Asset liability mismatch can cause a lot of distortions in prices, especially in a stress period. Because अगर कस्टमर ने पैसे निकाल लिए ना, तो फिर एज एन एसेट मैनेजर मैं तो अपना अच्छा एसेट को 40% 50% नीचे बेचूंगा, राइट?
Plus, this is more structured. This is a far bigger opportunity. Mutual funds are very plain vanilla. वो आपको typically AAA plus papers देंगे. ITC होटल जैसा काम कोई म्यूचुअल फंड नहीं करेगा. Because ये स्किल सेट म्यूचुअल फंड्स भी अभी धीरे धीरे इंडिया में सीख रहे हैं. This is a more specialized skill set. अगर S&P में सर US मार्केट्स में पिछले 13-14 साल में 13% डॉलर रिटर्न बनाए, 10% मीडियन फंड ने दिया है, तो अगर कोई अच्छा एसेट मैनेजर इंडिया में ये भी डिलीवर करेगा ना, तो मेरे हिसाब से वो आराम से 18 से 20% रिटर्न तो डिलीवर कर देगा. अगर डॉलर में लोग 10% रिटर्न डिलीवर कर रहे हैं, डॉलर में अपना डॉलर रुपी का डेप्रिसिएशन ही साल का 4% चलता है, राइट? आराम से ये स्ट्रेटेजी डिलीवर कर सकती है. म्यूचुअल फंड्स में मेरे हिसाब से मेन रीजन इज एसेट लायबिलिटी मिसमैच, and that is why a lot of mutual funds are also now launching private credit funds, because they feel AIF is the best vehicle to do this. So my question was, the best borrower will pay you the least, right? Is it not true? And No. the worst will pay the most. No. अब जैसे ये वो बैंगलोर वाला केस स्टडी देखिए. Every opportunity is unique. Every opportunity is presenting you at that time, because that opportunity cannot be solved by the banking system. जैसे ये स्पेशलिटी केमिकल कंपनी है सर, इट्स अ 1700 करोड़ रेवेन्यू कंपनी, 150 करोड़ एबिटा, ऑलमोस्ट डेट फ्री. क्या बोरोवर खराब है? कोई एंगल से नहीं, राइट? बहुत अच्छा बोरोवर है. स्पेशलिटी केमिकल कंपनी, डेट फ्री, 1700 करोड़ रेवेन्यू, 25 साल से चल रहा है, एशियन पेंट्स को सप्लाई कर रहा है, कोई खराबी नहीं है इसमें. अब वो मेरे से पैसे क्यों ले रहे हैं प्रमोटर? बिकॉज अपनी इक्विटी खरीदने के लिए ना उसको बैंक से पैसे नहीं मिलेंगे. So that is why it is a unique situation. It is a matter of private credit. Banks don't give money to buy private equity. अपना खुद का equity खरीदने के लिए उसको बैंक से पैसे नहीं मिल सकते. अब जैसे ये अपना बैंगलोर वाला था, 550 करोड़ लिया, कितना कोलेटरल है? ओसी रेडिया, हम अप्रूवल की बात भी नहीं कर रहे, 2000 करोड़. महीने का कितना बेच रहा था उसके बाद? 40 करोड़. उसने क्यों पैसे लिए? क्योंकि बैंक्स लास्ट माइल फाइनेंसिंग के लिए पैसे नहीं देते. सर आप हमारे सारे एग्जांपल्स देखिए, हर में कोलेटरल कवर 3 गुना है, हर में कैश फ्लो है, ब्याज आपका कैश फ्लो से आ रहा है, तो ये आदमी खराब कहां से है? सिचुएशन यूनिक है. सी ये जो बात है ना कि क्रेडिट मतलब बैंक्स, आई थिंक इन इंडिया क्रेडिट मतलब बैंक्स इज द ओनली नोशन दैट एग्जिस्ट. I want to break that notion. I want to challenge that notion. There are so many circumstances which we at Neo call special opportunities, special credit opportunities. प्राइवेट इक्विटी को पैसा एग्जिट देना है, अपने कंपनी का इक्विटी खरीदना है, लास्ट माइल फाइनेंसिंग चाहिए, अहमदाबाद आईटीसी होटल है उसको रेनोवेशन के लिए फाइनेंसिंग चाहिए. ये सारे अपॉर्चुनिटीज को हम क्या बोलते हैं? स्पेशल क्रेडिट अपॉर्चुनिटीज. कितनी बड़ी मार्केट है साल की? 50,000 करोड़. कितना बड़ा हो जाएगा? 1.5 लाख करोड़. बड़ा मार्केट है. हमारे बोरोवर्स अच्छे हैं, कैश फ्लो बना रहे, कोलेटरल दे रहे, यूनिक सिचुएशन है. एंड जस्ट वन मोर पॉइंट, not to bore all of you, I think percentage ना is a very weird concept. जब प्रमोटर सोचता है ना, वो नेसेसरीली परसेंटेजेस में नहीं सोचता है. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. 100 रुपए का प्लांट है मेरे पास, मैं उस पर 10% रिटर्न बनाता हूं, तो मेरे कितने बनेंगे? 10. अब कोई कारण से मेरा वर्किंग कैपिटल खत्म हो गया, मेरा प्लांट बंद हो गया, तो मेरे कितने बन रहे हैं? 0. मैंने आपसे 10 रुपए वर्किंग कैपिटल ले लिया, तो मेरा प्लान चालू फिर से. अब मेरे कितने बनेंगे? 10. आप मेरे से 2 रुपए मांग रहे हो, मैं आपको दूंगा नहीं दूंगा? दूंगा ना. आपसे 10 रुपए लिए, आप मुझे बोल रहे हो मुझे हेमंत 2 रुपए देना तभी दूंगा, तो 100% दे दूंगा, बिकॉज मेरे तो तब भी 8 रुपए बन रहे हैं. तो परसेंटेज में अप्लाई कर देते हैं इसको. आपके 10 रुपए पे मेरे कितने बने? 10 रुपीज. ऑन योर 10 रुपीज 10, हाउ मच डिड आई मेक? 100% रिटर्न्स. हाउ मच एम आई गिविंग यू? 20% returns. Is it abnormal? It sounds abnormal. But in the life of a journey of a company which is 20 years, 30 years, in 2 years, 3 years, it is about absolute maths also. I think we'll answer the questions subsequently now. I would love now to hand it over. काम तो ब्याज का है. Sure, we'll take this last question. Sir, my name is Sandesh.
So what is blue chip fund and fund of fund? What is blue chip fund and fund of fund? Definitely. I think maybe you have just set the stage for Varun. So Varun will answer what is fund of fund. It's best to leave it to an expert to answer fund of funds. As I said, अपना काम क्रेडिट का है, ब्याज का है, हम बोरिंग काम करते हैं. हमको कैश फ्लो चाहिए, जेब में ब्याज आते रहना चाहिए और रात को नींद भी आनी चाहिए. अगर आपको ग्रोथ चाहिए, आपको इंडिया के बूमिंग इकोनॉमी में खेलना है, प्राइवेट मार्केट्स में पार्टिसिपेट करना है, जो भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, हर अपॉर्चुनिटी बड़ी है. वी आर फॉर्चुनेट टू बी इन दिस कंट्री एट दिस टाइम. विद दैट आई विल हैंड इट ओवर टू वरुण. देवीना. Thank you so much, Hemant, and that was indeed a very, very insightful presentation on the private credit market. And as we say, there is no alternative to alternatives. So the other side of the same coin, private equity, and we're going to be discussing that in detail with Varun Bajpai. He's the CEO of Neo Wealth Management. Varun, I request you to come on stage and dissect the India private equity landscape for us and showcase some of the existing opportunities. So much of your valuable time and being here with us. My name is Varun Bajpai, and I think on behalf of Neo, let me welcome all of you again. हेमंत के बाद बोलने का हमेशा एक प्रॉब्लम ये है कि पहली बात बहुत काबिल आदमी है, बहुत ही एक्सपीरियंस फंड मैनेजर है, and he's a very interesting speaker. So I will do my best to at least bring a bit of that same interesting conversation to what is happening on the private market side. So just like Hemant was talking about private credit, I want to talk to you about private equity. And इसमें शायद आप लोगों की और आप में से यहाँ बहुत एक्सपीरियंस लोग बैठे हैं, तो आई थिंक आप लोगों की फेमिलियरिटी स्पेस से आई वुड एक्सपेक्ट काफ़ी होगी, क्योंकि नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग बट बिकॉज द न्यूज़पेपर्स कीप हैमरिंग अस एवरी डे विद deals and flows on what is happening in the private equity space. But very quickly to understand, and to our friend who asked the question on blue chip, and I'll get to fund of funds also, private equity means nothing other than investing in equity that is private, which means it is not public. So it is not listed equity. So anything जहाँ पे भी आप किसी कंपनी का शेयर या स्टॉक खरीद रहे हैं जो अभी किसी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है, by definition that is private equity. So there's nothing very complicated about it. Any company that has not yet listed, the shares of that company would classify as private equity. Private equity, I think भारत में पिछले 15-17 साल से I think it has started and now has become a very, very big thing. And what has happened is that in this ecosystem, what used to be small, मुझे याद है मैं 2004 में I used to run an equity $1.2 billion equity fund. उस समय प्राइवेट इक्विटी के नाम पे और स्पेशली वीसी के नाम पे एक नरिमन पॉइंट में आप लोग जानते भी होंगे शायद, इंडोशन करके एक फंड होता था, छोटा सा 40 मिलियन का फंड था, बट दे वर पायनियर्स इन द स्पेस एंड दे वर इन्वेस्टिंग इन सम ऑफ द अर्ली स्टेज कंपनीज. बट वी हैव कम अ लॉन्ग वे. सो 3 चीजें हुई हैं और इसके बारे में थोड़ा मैं आगे बात करूंगा. अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट बहुत बड़ी हो गई है. वैल्यू क्रिएशन हैज नाउ बीन डेमोन्स्ट्रेटेड, और आप में और हम लोग सब रोज देखते हैं कि रोज नई नई कंपनीज में प्राइवेट इक्विटी का पैसा जाता है, एंड यू सी अ लॉट ऑफ सक्सेस स्टोरीज व्हिच इवेंचुअली गो ऑन टू लिस्ट, and monetization has become real. So it is not just that we have seen an investing cycle, we have now seen a very reliable monetization of assets in this space. मैं statistics से आपको बोर नहीं करूंगा, I think you can read the slide, but the only point I'm trying to make is this is globally and now in India a very large space. It cannot be ignored, and this very closely tracks the development of a market. So जैसे जैसे भारत ने प्रगति की है, जैसे जैसे हमारे यहाँ कंपनीज की साइजेस बढ़ती गई हैं, इन्वेस्टमेंट साइजेस बढ़ती गई हैं, you will see private equity become a very active player in the market. And as you can see, there is a $1.3 trillion of dry powder globally waiting to invest in private equity. Once again, this is again जैसे हेमंत प्राइवेट क्रेडिट में बात कर रहे थे, मैं इसमें आपका ध्यान थोड़ा चाहूँगा. If you look at the top 25%, let's forget the top 25%, even median returns in the private space have beaten listed market returns by a huge factor. अगर आप
इनफैक्ट ब्लू चिप टू ब्लू चिप कंपेयर करें लिस्टेड मार्केट्स और अनलिस्टेड में, इट्स ऑलमोस्ट बाय अ फैक्टर ऑफ 2x. सो अगर आपको लगता है कि इक्विटी मार्केट्स 13, 14, 15% डिपेंडिंग ऑन आपके कैसे इन्वेस्टमेंट्स रहे हैं, उसी का अगर लाइक टू लाइक ले, इफ यू हैड इन्वेस्टेड इन हाई क्वालिटी अनलिस्टेड कंपनीज, chances are you would have made almost 2x the returns. And I'll talk again about this in more detail. I just want to run you through the dry data first. I have more interesting conversation actually to have on this as we move forward. And the most important part is, even if you look at the bottom, the worst performers, actually they have not done badly. I'm very sorry, this is इंडिया में आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हुई है. सॉरी, this is the point I was making on why the charm of this space of investing, that returns continue to beat listed market returns as long as you are doing, chasing the same level of quality in both markets. And जो मैंने बोला कि opportunity बहुत बड़ी है, ये सिर्फ मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ. अब वैल्यू क्रिएशन और मोनेटाइजेशन, द नंबर्स हैव बीन very very convincing and very encouraging. So let me get to the more interesting part of my conversation. The first premise I would say is, हम सब लोगों ने जो न्यू एज, न्यू इकोनॉमी, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टिंग देखी है, आई वुड बेट कि दो तरह से हम लोगों ने सुना है, स्पेशली पिछले 4-5 साल में. या तो यू हैव लुक्ड very happily at stories like Nykaa, which were private companies and then had a spectacular listing event, right? They were very well developed companies जब तक उनका IPO हुआ. तो एक तो मैं अपनी बात कर सकता हूँ, हम में से कई लोग बैठ के we saw the success story go past our eyes and wished that we could have maybe participated in such stories before listing and saw the spectacular success in listed markets. And दूसरा, we have also experienced, and I'm sure हम सबके बहुत सारे relatives, दोस्त, professional colleagues हैं, where we've heard people say कि यार मैंने 4 साल पहले एक स्टार्टअप में पैसे लगाए थे, उस स्टार्टअप में मेरा पैसा 10 गुना हो गया या 15 गुना हो गया. And we've seen people who have made 40x and 50x returns and even more. And you must ask yourself, for the most part, most people in this market actually have missed both the buses. Not some of the experienced people like you, लेकिन जितने लोगों को मैं जानता हूँ, आधे लोगों को लगता है यार मैंने स्टार्टअप में मुझे इन्वेस्ट करना चाहा था, वो पूरी इतनी बड़ी बूम आई और मैंने मिस कर दी. और दूसरा लगता है कि काश की स्टोरीज लाइक नायका, अगर मुझे IPO के पहले मुझे मिल गया होता स्टॉक, या मुझे 2-3 साल पहले नायका में इन्वेस्ट कर दिया होता, I would have become a very wealthy individual. I would like to draw your attention to the fact that पिछले 4-5 साल में भारत में $100 billion, I will repeat this number, $100 billion has come into this early stage company universe. So the real question to ask is, तो फिर पैसे बने किसके? Actually, just like in any asset class, the people who really made money in this space are people who tracked this space with great rigor, great discipline, great knowledge, information, great thoughtfulness. क्योंकि इस स्पेस में एक चीज ध्यान रखिए, लिस्टेड कंपनीज में आपको हर कंपनी का डेटा बहुत आसानी से अवेलेबल है. So the choice to invest in a company or not, as long as you are reasonably educated about financial markets, is a simple one. आप एक कॉलेज के लड़के को भी जिसको बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की समझ है, he can look at a company, make an own assessment कि ये कंपनी अच्छी है, बुरी है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी थी, रेशियोज थे. अनलिस्टेड में सबसे बड़ी दिक्कत ये कि आपके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है. If I was to ask you कि today what are the detailed financials of some of the biggest education company or food delivery company, actually that information is not in the public domain. तो सबसे बड़ा पहले तो चैलेंज ये है कि आप किसी चीज को बिना समझे आप इन्वेस्ट ही नहीं कर सकते. दूसरी चीज, अगर आपको समझ भी आ गया, हाउ विल यू इन्वेस्ट? These companies for the most part are not inviting investment from individuals, especially at a stage where they have become good companies.
So I will talk about this on a subsequent slide. This is what I was talking about. Ecosystem बहुत बड़ा हो गया है. भारत में अगर आप देखें, actually यहाँ मैंने 660 लिखा है, but actually the reality is I think there are more than 1,000 active VC firms of all shapes and sizes. When you look at the ecosystem, there is a very mature ecosystem now. And more importantly, we now have, as I was saying, great evidence that companies can not only get investments but also go on to list and create extremely high shareholder value. ये आप लोग सब भारत के बारे में जानते ही हैं. I just want to re-emphasize the point. मैं 23 साल से इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा हूँ. I have just been focused on India investments. I have done everything from airports to technology companies. I don't think there has been a better time for India to double down and bet on its future, and I think all of us can feel it. I think wealth is coming, prosperity is coming to India in a very big way. मेरे एक बहुत बड़ी थीसिस है कि अगले 10 साल में we will see an India जो कि 500 साल में इंडिया में कभी नहीं हुआ है, which is actually a near disappearance of the poor. तो हमारी मिडिल क्लासेस और लोअर मिडिल क्लासेस रहेंगी, लेकिन जो हमारे यहाँ जो एब्सोल्यूट गरीबी थी, एंड दिस इज सच अ हैप्पी स्टेट, क्योंकि मैं फिर से आपको बोलूंगा पिछले 500 साल में भारत में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि गरीब लोगों की संख्या इतनी कम हो जाए. एंड एक्चुअली a country full of middle class people. I am a middle class person. I come from a middle class family. I think that's actually a very nice place. We are a very high number of educated people with good aspirations. And imagine an India which actually has a very low number of really poor. It means a lot of prosperity in the country. This is a very interesting point I want to make, and this I have seen, I think personally, as I was saying, over the last 23 years. अगर आप मोटा 10 से 12 साल की 3 buckets करें, 2000 से 2012 तक, I call it the phase of the pioneers in early stage unlisted companies. Pioneers क्यों? Entrepreneurs भी कम थे और कैपिटल तो डेफिनेटली नहीं था. तो we see a few very successful companies like Make My Trip, Flipkart come out of this era. लेकिन मैं इन लोगों को बहुत ज़्यादा admire करता हूँ क्योंकि उस समय ecosystem was not supportive, and the entrepreneurs were basically just achieving success through sheer grit and determination. Make My Trip मुझे याद है जब शुरू हुआ था, there was a lot of skepticism कि ये इस तरह how will the travel industry work. Flipkart, I remember when they started, people said how are people going to buy books of Flipkart like that. The last 10 years, of which the recent boom is an example, is what I call the leaders in the space. So अच्छी चीज क्या हुई? Entrepreneurs की संख्या बहुत बढ़ गई. Lots of entrepreneurs, and actually, as you and I know, now when somebody in your family says कि मैं entrepreneur बनना चाहता हूँ, it is no longer something that people are worried about. In fact, more often than not, people are being encouraged कि हाँ बेटा या बेटी प्लीज आप जाके जरूर entrepreneurship try करें. ऐसे entrepreneurs के लिए capital is also now available in abundance. As I said, more than 1,000 funds operating, and this is terrific because actually, and I don't want to bore you right now, but you will notice that even in the US, Silicon Valley was actually created over just 15 years. अगर आप Silicon Valley की history देखेंगे, 1950, 1955 तक there is no Silicon Valley, and by the time you reach 1975s and 80s, Silicon Valley is a real thing which is funding the the Bill Gateses and the Apples of the world. So कभी-कभी हमको अंदाजा नहीं रहता है कि technology और capital, if they come together, how quickly things can mature, and I'm very optimistic that is what is happening to India. बस एक चीज definitely हुई कि पिछले 4-5 साल में कई बार when things are going very well globally and in India, of course a lot of exuberance took hold of the market. So लोग कुछ ज्यादा ही enthusiastic हो गए, business models कुछ ज्यादा ही adventurous हो गए, and this is the point I'm talking about newspapers. आपको याद होगा 2 साल पहले लगता था कोई भी स्टार्टअप शुरू हुई, 3 महीने में वो 4 राउंड हो गए, उसके बाद वो यूनिकॉर्न, and it just started feeling like it's
it's become very easy to make these billion-dollar companies, and sadly, real life is not that rosy. But one good thing that has happened actually, and because there is, as they say, there was a startup winter in March and April this year, last year, sorry, in 2022. The one thing it has done is, and which is what makes me very, very hopeful about the decade to come. Actually, entrepreneurs को अकल आ गई है, and I must say, investors को भी अकल आ गई है. They have learned a lot from this experience, which is they know that the entrepreneurs are high quality. Capital is high quality. Wouldn't it be nice if every entrepreneur and investor started to focus and say कि यार जो भी model बनाओ, have basic business sense in it. Chase things like revenue, cash flow, EBITDA and real profitability or PAT. अगर आप ये सोचे कि इस तरह के ecosystem में entrepreneurs and capital providers start focusing on it, it can lead to tremendous things. One other thing I will tell you is human history में आप कभी भी, from the time we used to live in caves as cavemen, you can never go wrong betting on technology. As a caveman, you should have invested in good spears. अच्छे भाले और चाकू बनाने में आप इन्वेस्ट करते तो शायद आप अच्छा जीवन होता आपका. At Edison's time, you should have invested in light bulbs. In Elon Musk's time, you can invest in the Teslas and the SpaceX's and the Neuralinks. Technology in itself is what drives humanity, and at no point in human history can you go wrong with it. Only thing is, don't get carried away. It's very glamorous. It's sometimes hard to understand, so it's very difficult to tell what is good technology from what is just good looking technology. Lekin my basic point being, agle 10 saal, if we can marry conventional business sense with quality entrepreneurs, great technology and solid capital, I think we are in for some an awesome ride, and which is what we are very, very bullish on. मैं 2-3 चीजें और बोलूंगा which is not on the slides. तो मेरा इसमें सबमिशन ये है, बाकी सब तो is all fancy numbers, and I would genuinely request all of you, आपको किसी भी समय मेरे presentation में, if you feel like making a comment or a question, it will only enliven the conversation. So feel free to stop me or share your thoughts or ask a question. लेकिन मैं आपको 3 चीजें बोलूंगा. आज से शायद 20 साल पहले we could not access companies in India, you and I, or any HNI or any normal person could not access the shares of a company unless that company was doing an IPO. Correct? 2000 में आपको IPO नहीं है तो आपको कंपनी के शेयर आप खरीद नहीं सकते. धीरे धीरे pre-IPO का concept became acceptable, right? And in the last 5-7 years, we've seen people get very focused on buying pre-IPO shares, whether it's NSE or Nykaa or whoever else. मेरा सबसे पहला सबमिशन अब आपको ये है, now any listed market investor does not have the option, I will repeat, does not have the option to not understand unlisted markets. क्योंकि अब अगर आपको लगता है कि मैं स्टॉक तब खरीदूंगा जब वो लिस्ट होगा, हो सकता है आपकी तब तक गाड़ी छूट गई है. Because the more sophisticated end of the investor is now trying to get in much ahead, and I'll show you a slide where you are actually making much higher returns prior to IPO. मैं फिर से बोलूँ, अगर नाइका आपने 5 साल पहले का, नाइका extreme example because it's very successful, but even companies that did just dramatically well, all of us wish we should have bought that stock if we could have had access and knowledge to buy that stock 4 years ago, 5 years ago. So पहली चीज तो ये है कि अब unlisted market investors don't have an option of not understanding and investing in unlisted equity. मेरा prediction है अगले 4 से 5 साल में आप देखेंगे most large listed portfolios will have a 15 to 20% allocation to unlisted equity, if not more. That's the first thing. Second thing is, जैसे अगर आपको कोई स्टॉक मार्केट में बोले कि यार मैंने आज तक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया है, मैं कहाँ, लेकिन मेरे को स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने का बहुत मन है, मैं कहाँ से शुरू करूँ? And this brings us to the question that was asked earlier. आपका शायद, and all of us being from mutual fund, as Hemant was saying, आपका शायद पहली राय हो कि यार ज्यादा स्ट्रेस मत लो, एक लार्ज कैप इंडेक्स फंड या लार्ज कैप म्यूचुअल फंड लेके आराम से SIP करके स्टार्ट. It will give you some understanding and it will keep you protected. The point on fund or funds
is exactly that. You know, fund of fund strategies allow you, and I'll talk about it, allow you to create a large cap fund in the unlisted market. जितने फंड्स अच्छे कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मान लीजिए मैंने बोला 1000 फंड है, अगर 1000 फंड में मैं 5, 6, 10 अच्छे फंड चूज करूं, क्योंकि वो फंड मैनेजर्स तो मेहनत कर ही रहे हैं, और मैं इन 10 फंड्स में लगाऊं और हर फंड 10 से 15 कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, इसका मतलब एक फंड ऑफ फंड इन्वेस्टमेंट में, मान लीजिए आपने एक AIF, जो कि हमारा एक सेकेंड AIF2 कैटेगरी फंड है, आपने उस पर 1 करोड़ रुपया लगाया, effectively your 1 crore has got distributed between 100 quality companies, because that fund invested in 5 funds, each of them let's say has invested in 15 to 20 companies. So 75 से 100 कंपनी के बीच में आपका 1 करोड़ रुपया डिस्ट्रीब्यूट हुआ है. अगर 100 कंपनी, इसका मतलब हर कंपनी में आपने 1 लाख रुपया लगाया है. ये अपॉर्चुनिटी आपको अवेलेबल ही नहीं है, अदरवाइज आप किसी अनलिस्टेड कंपनी में 1 लाख रुपए से आप एंट्री ही नहीं है. सो दूसरी चीज इज द लार्ज कैप fund construction piece. The third thing I would say is every Indian must own this asset class. जिस तरह शायद धीरू भाई के जमाने में I think people used to say right, the starting of stock markets, I would actually like my uncles and brothers and sisters and friends to actually have exposure to this space. This is not an asset class that should remain with the sophisticated or the ultra rich. So our journey also is how do we make sure that everybody has access to these companies as they progress. Sorry, इस स्लाइड में बस मैं एक चीज बस बोलूंगा. आप लोगों ने ये सीरीज ABCD बहुत सुना होगा या नहीं सुना हो. जिन लोगों ने नहीं सुना उनको मैं जल्दी से एक्सप्लेन करता हूं. सॉरी, दिस क्लिकर इज, this is all just jargon to say seed series is when somebody goes to their father, mother, friend, brother and says यार मैं एक कंपनी शुरू करना चाहता हूँ, प्लीज मुझे 1 करोड़ 50 लाख 25 लाख जो भी मुझे चाहिए. That is this round. Series A round is typically when institutions, the first time, not your friends, brothers, uncles, somebody who's known you, उनको छोड़ के somebody institutional says कि यार इस कंपनी में दम लग रहा है, एंटरप्रेन्योर में दम लग रहा है, इसके बिजनेस प्लान में दम लग रहा है, एंड दिस कंपनी हैज प्रूवन समथिंग कि यस माय बिजनेस मॉडल वर्क्स, आई एम बिगिनिंग टू जनरेट रेवेन्यू एटसेट्रा एंड आई हैव गुड पोटेंशियल. दैट इज सीरीज A. सीरीज B इज द नेक्स्ट बिगर राउंड वेयर लार्जर इंस्टीट्यूशन से कि यार अब इस कंपनी का मॉडल सेट हो गया, दे आर वेल ऑन दैट पाथ, हाउ डू वी नाउ हेल्प देम ग्रो ड्रामेटिकली. And that is the point I'm making. Actually, this to this ride, call it from series B to series D or E. इसके बाद actually, by the way, the pre-IPO round start. Typically, by the time you're at D, यहाँ पे आके usually now company से यार कि मैं एक pre-IPO round कर लेता हूँ, उसके बाद मैं IPO जा रहा हूँ. Or you may go straight from series D to IPO, depending on what your choice as a promoter and what you are advised to do. But जो मैं आपसे बोल रहा था ना, हम लोगों ने 2 ही चीजें चुनी है अखबार में, या तो नायका का धमाकेदार IPO, या अपने यारों दोस्तों से सुना कि अरे यार मुझसे अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, मेरा दोस्त बोला उसने स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया था, उसकी 10x हो गई उसकी इन्वेस्टमेंट. एक्चुअली द सीड पीस इज मच मोर फ्रॉट विद रिस्क. यहां पे आपको पता नहीं है एक्चुअली कि ये कंपनी का क्या फ्यूचर होने वाला है, unless you are very very much an expert in the space. And by after this, my submission is too late. Most of the unlisted returns are gone now. You might as well just buy the stock in listed markets. But actually, the juice and the expertise, and the rigor is here. And this is the place where actually all the large funds and experienced institutional money makes all their money. And we are trying to say, how do we get all of India to participate in this? Right? So, मैं आपको एक स्लाइड दिखाता हूँ. It's an actual company. We don't have to worry which company. इसके 2-3 बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं. सबसे पहला पॉइंट ये है, दिस इज बाय द वे द सीड एंड प्री सीड स्टेज. ऑब्वियसली आप जितना जल्दी
इन्वेस्ट करेंगे आप उतना ज्यादा रिस्क ले रहे हैं एंड इसीलिए आपके रिटर्न्स भी उतने ज्यादा। तो आपको देखेंगे जिसने यहां इन्वेस्ट किया अगले राउंड तक ही 70 टाइम्स इन द मनी। आई मस्ट कॉशन यू, while this company has gone 70 times in the money, there is a massive failure rate here. 20 में शायद हो सकता है 15 से 18 कंपनी इस स्टेज में फेल हो जाए। तो you might be actually hoping for the 70x return, but you are also very likely to lose a lot of money if you don't know what you are doing. It can just become like being in a casino or throwing darts at a board. और जितनी हम लोग ये कहानी सुनते हैं कि मेरे किसी HNI दोस्त ने पैसे लगाए, believe me, a lot of HNI money has played this which I call hobby investing. It looks nice, the entrepreneur looks nice, आपको थोड़ा technology is quite glamorous, you are told कि this company is going to grow like this and you take a chance. Now depending on your luck and skill, you might capture this or you might lose a lot of your money. The second interesting point, however, is there is no point in this cycle if you had invested where you would not have made fantastic returns. Please ask yourself, even in the last leg, this looks like a small return, but please look at the time gap. This is happening in a year, right? So it is, even if you made this investment, आप आराम कर रहे थे, आपने ध्यान नहीं दिया और ये एक स्टोरी निकल गई और आपको यहाँ ध्यान आया कि यार मुझे यहाँ इन्वेस्ट करना है, even this investment is likely to beat most of the other investments you would have made. So my second point is, first point is very early stage is fraught with a lot of risk. It requires a different kind of risk appetite and expertise. Second point is, at no point in the cycle are you not making an excellent decision. If the earlier you were, great, but even till the end. And lastly, listed markets. This stock could have gone up also, right? So I have no comment on the listed market. But my only point is, listed markets are then, you don't have an edge in the game. Everybody, it's fair play, market will judge it by very listed market standards. So what are we trying to do? So how do we capture that series B to D? Series B to D में 2-4 प्रॉब्लम्स हैं। पहली बात तो ये है कि अगर आप कोई भी अगर इस मार्केट में एक्सपोजर लेना चाहे, फर्स्ट ऑफ ऑल हॉबी इन्वेस्टिंग इज नॉट एडवाइजेबल, सो यू कैन नॉट बी स्पोरेडिक कि जहां भी मन आया वो एंटरप्रेन्योर अच्छा लगा. दैट्स नॉट हाउ यू पिक कंपनीज इन द लिस्टेड मार्केट. व्हाई वुड यू डू दैट इन द अनलिस्टेड मार्केट? So first thing you have to remind yourself is it is a very specialized game. All these funds are run by very competent fund managers who spend their whole day and lifetime figuring these companies and their data out. Which is the point that leads to diligence and depth of understanding. Please remember that in Series B, when a fund makes an investment in a Series B company, not only is the business model proven, chances are that fund has diligenced that company for 3 to 6 months. These are not overnight investments. And they have read every little piece of data and financial information on that company, which is very, very comforting. That is not available to you and me as individuals. At this stage, funds are writing checks of anywhere upwards of 100 to 150 crores per company in a typical Series B round. Which is the point on high threshold of investment. So अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपया है, मैं इस राउंड में पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकता. I am not invited to this round. I am not invited to this round even if I have 25 crores. Forget 1 crore. So even some of the largest family offices cannot participate in this at a direct company level. And lastly, risk, return and cost and complex structures. आपने इन्वेस्ट कर भी दिया तो आपकी ओर से मॉनिटर कौन कर रहा है? Do you have the capability to actually understand what the data means, even if you got the data, which you won't? I'm very sorry. And hence, to my friend's question on fund of funds, that's why we want to do 2 or 3 things. A fund of funds is nothing but a... So, जैसे मैंने बोला, एक चॉइस ये हो सकती थी कि हम अपना ही फंड शुरू कर दें, लेकिन इस देश में कम से कम
1000 फंड मैनेजर्स में से 500 लोग तो बहुत ही काबिल हैं. They are really giving their lives, and there are very competent fund managers who are very focused on finding the right companies. So I don't wish to replicate that effort. What we want to use our institutionalized capability at Neo Group between Nitin, Hemant, myself, all our senior people, is to, among those 1000 fund managers, how do we choose the top 5, 10 that we really like based on track record? And it's not a simple assessment that we do. We run a very detailed diligence program on the fund manager, on his track record or her track record, kind of portfolio companies, what kind of sector focus, what kind of rationale. So हम लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं. It is not lightweight investing. And then we pick 5 or 6 or 10, depending on the size of the funds, into that strategy. And what that does is it allows people like my mother, who is, as I said, does not have that much money, will probably even, might find even 1 crore to be a stretch. But what I am striving to do, as I said, is every Indian should be able to get access to what Sequoia and Matrix and Accel and large funds like these are investing in. So what I tell her is, हमारे पास एक कैटेगरी 2 AIF स्ट्रक्चर है जो कि आपका फंड ऑफ फंड्स है. इस फंड ऑफ फंड की एक बहुत बड़ी खासियत है, एंड आई वोंट बोर यू विद द प्रोडक्ट इटसेल्फ, बट इसकी बस 2 खासियत मैं आपके साथ छोड़ना चाहूंगा. सबसे बड़ी बात तो ये है कि थिंक ऑफ मी लाइक अ बल्क बायर, which is the biggest advantage this fund of fund has. अगर मुझे वन अविग्ना या कोई एक बिल्डिंग थी जिसमें मुझे याद है कुछ 35 मकान एक साथ खरीदे गए थे, राइट? It is exactly that. Where you or I individually might write a 1 crore or 2 crore or 5 crore check, as a fund of funds, I become one of the biggest investors in these funds that I have selected. I become a very important client to them. And what that does is my fee structures, because I am a bulk buyer, I actually request these funds to offer me slightly better terms than what is available to the regular market. And I'm saying slightly, it's actually not slightly, it's very substantial when I describe the benefits that we get. क्योंकि मैं पहली बात में एक बार नहीं इन्वेस्ट करूंगा. कोई भी अगर अच्छा फंड मैनेजर है, मैं उसके आज के फंड में भी इन्वेस्ट करूंगा. And as long as that fund manager continues to do well, which I hope they will, I am going to invest with them in 1 fund, 2 funds, maybe 3 funds. So they have great incentive to provide the best terms to me. The second thing is, and therefore what that does is, from a cost perspective, and this you will understand, the end investor gets better cost coming through the fund of funds than even investing directly in the fund. अगर उस फंड का स्ट्रक्चर मान लीजिए 2% फीस है, अगर आप मेरे फंड ऑफ फंड्स के थ्रू जाएंगे तो चांसेस है आपको 1.5% फीस मिलेगी मेरी फी काउंट करने के बाद. That's because I am getting a bulk discount which you cannot get. That's the first thing. Second thing is significant expertise, which I already spoke about. But the most important point I want to talk about is we have set ourselves a hurdle rate of 30% before making any carry. I will repeat that again. Most funds you see today actually talk about a hurdle rate of 10%. I have an intellectual question to pose to you. Hemant ke fund mein, which is a very safe, cash collateralized, asset collateralized fund mein, to 10% hurdle samajh aata hai. Because they are trying to return credit returns on that fund. And it is at the safest end of this investing spectrum. This is actually unlisted equity, right? So it's firstly equity risk, and it is illiquid unlisted equity. Why should any fund manager ask you for a 10% hurdle? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस क्लास में 10% के ऊपर रिटर्न ला देने में कोई आपको पीठ थपथपाने की जरूरत है. Listed markets give me better returns. Late stage funds give me better returns. So we think talking about a 30% hurdle, and I will say this, we are the only people in the market saying this loudly to friends like you, to investors, saying we have to question why this market should not run. I must confess 30% is we are trying to make a point, but 25 से 30% hurdle rate तो definitely होना चाहिए in funds में.
diversification across 50 to 75 companies. So anybody who puts in a crore, if your client puts in a crore, they are getting access to 50 to 75 companies that some of the most marquee funds after diligence are getting by writing 150 crore checks. So basically a 1 crore check person is playing the same, having the same access as large institutional funds are having, which is a huge benefit. And I told you about the fees. And lastly, a very simple structure. Lot of information and many other benefits like co-investment, etc. I have already spoken about this. So we are very excited. I think मेरा submission बस यही रहेगा कि this is a very exciting time in the space. And not knowing unlisted equity, as I said, is now not a choice. और मैं एक चीज और बोल रहा हूँ, अगर आप अपने क्लाइंट से अनलिस्टेड इक्विटी के बारे में नहीं बात करेंगे, मैं गारंटी के साथ कह रख सकता हूँ, कोई ना कोई तो उनसे अनलिस्टेड इक्विटी की बात जरूर कर रहा है. And if nobody is talking, they are seeking out people to understand what is happening in unlisted equity. So this is a very, very big wave from an investment perspective. And maybe I'll request any thoughts and comments, but I'll end with a quote by a very famous German philosopher called Arthur Schopenhauer. And you know, Schopenhauer made a very nice comment. He said, all truths go through 3 stages. कोई भी सच जब पहली बार बोला जाता है, and मैं सच यहाँ ये बोल रहा हूँ कि अब unlisted equity का time genuinely आ गया इंडिया में. You cannot not invest in it or make it 15 to 20%. So Schopenhauer made a very interesting comment about truth. He says, all truths go through 3 stages. First stage is the truth is ridiculed. सब लोग बोलेंगे ये सब क्या मजाक है यार, बकवास बात है, it has no merit. Second stage is that truth is very violently opposed. You'll see a lot of intellect behind it, why this is not relevant, why it doesn't make sense. And the third stage is it is accepted as a self-evident fact. और लास्ट स्टेज में जब एक्सेप्ट होता है तो सब लोग बोलते हैं हाँ यार ये तो ऑब्वियस तो था यार, सबको पता था ये होना ही है, एंड इट इज ट्रू, यू नो. सो मुझे लगता है अनलिस्टेड इक्विटी के साथ यही होने वाला है. पहले सब लोग यार ये समझ नहीं आता, ये स्टार्टअप वगैरह, do not, it is a very big industry globally. Silicon Valley has been doing this very successfully. The companies like Microsoft and Apple came out of this 50, 60 years ago. We are very fortunate that this time is here in India. So thank you. As you can tell, we are very passionate about the private market space, and certainly about the, I am very passionate about private equity and unlisted space. I would request you all to, first of all, any thoughts, comments, questions. I'm sure all of you have some interesting things, and we can offline also chat more. Sorry, please, can we have some mics? Yeah, hi. This is Titan here. I have a couple of questions. One is about the liquidity, which I read in the brochure. It's a 12-year lock-in, plus it may extend a couple of years more. Isn't it too much for an Great investor? question. Thank you for asking it. So, एक चीज आपको ध्यान रखनी है. All venture capital or any early stage funds are typically designed to be 8 to 10 year funds, right? उसका पर्पस सिर्फ ये है. एक्चुअली आप एक चीज जरूर ध्यान में रखें, किसी भी फंड मैनेजर को मजा नहीं आता है आपका पैसा 8 साल 10 साल रखे. एक्चुअली he wants to return or she wants to return the money. But the only thing is that in this space, because you are doing B2B, the fund manager also wants to capture the full range of returns. जो मैंने आपको स्लाइड दिखाई थी ना, आप विश्वास करिए अगर आप उस फंड मैनेजर होते, you would have done a suboptimal job अगर आपने वो यहाँ पे आके बेच दिया होता just because time ran out. So that's the first point. Second point is, all portfolio companies don't take 8 years. Lots of companies, especially when you are coming in at Series B, will start targeting liquidity events or listing events in 4 से 5 साल. तो अगर आप, as long as fund selection is good, मान लीजिए एक फंड ने 15 से 20 कंपनी में पैसा लगाया है, my expectation is 4 से 5 साल के अंदर आपका कैपिटल प्लस रिटर्न आना शुरू हो जाना चाहिए. बिकॉज 2-3 कंपनी लिस्ट हो गई होगी, 2-3 प्री आईपीओ स्टेज में होगी, और हो सकता है 4-5 कंपनी अभी भी कुक हो रही है. That goes again back in the fund, right? And the investor will get money only after 12 years. So it depends on what the fund manager thinks is the right deployment strategy. So 2 things can happen.
One, the fund manager may actually, and that they would have sought your consent. It is part of the fund terms, and if even when we invest, we already take care of that. One is to say, look, I have great return strategies. And very often investors are very comfortable saying, हाँ यार तुम इतना अच्छा काम करो, 4 साल में पैसा लौटा रहे हो, अभी तो I'm sitting on so much upside. एक चीज ध्यान रखिए, 30% अगर मेरा हर्डल है परफॉर्मेंस में, मेरा फंड ऑफ फंड्स में, इसका मतलब नीचे की जो ग्रॉस रिटर्न है दैट इज 40% प्लस. दैट मींस आई हैव टू टारगेट 40% ग्रॉस IRRs over this 7, 8, 10 whatever period for me to even make the first rupee of performance. And obviously I want to make some money, right? So I must have conviction कि ये, अब आप सोचिए कोई भी इन्वेस्टमेंट 8 साल, 7 साल, 6 साल, 9 साल, जो भी आपको टाइम फ्रेम पे करना है, is returning 40% plus gross IRR. Do the math on the MOIC. आपका पैसा दुगुना, तिगुना, चौगुना क्या हो रहा है? So at that stage, most often than not, if you are not scrunched for liquidity, you will say, "Yeah, this is great, just redeploy." And the last thing I will tell you about our fund, the reason you see the long time span is only to accommodate every fund. I have to be bigger than the longest fund that I plan to invest in, obviously, right? It does not, from a fund of funds perspective, it does not mean anything other than technically covering the lifespan of the funds that I'm investing in. So you will, there's another very nice thing about fund of funds. There is no holdback of cash. जिस दिन अंडरलाइंग फंड ने 1 रुपया भी रिटर्न किया, वो सीधा आपको आएगा. We don't have any redeployment. We have committed to no redeployment. जिस दिन एक फंड ने 1 रुपया भी लौटाया, वो सीधा आपके बैंक अकाउंट में ले. दूसरा, टैक्स का कोई इम्पैक्ट नहीं है. Not 1 rupee. It's a complete pass through. So it behaves as if you had directly invested. So you are just playing. You look at Sequoia or Matrix or any of the global majors. They in fact run larger or equivalent timelines. And that is the result because they are trying to look for the next Microsoft, the next Apple, and so on and so forth. So it is just to allow for the growth of these companies. Tax is in the hand of the investor, right? Yes, Tax that's right. left. That's right. So the same thing applies to the private debt, private credit space also. Let's say the IRR is 20% is what we are targeting on the gross Yes, level, yes. and 30% is the tax slab because these are high net worth individuals who are raising Yes. 1 crore plus ticket size. 6% goes in the tax, 2% goes in the fees plus there's a profit share fee. So and then if we're making 10% post everything, so 6%. No, actually you would. No. You would actually end up making, like maybe Hemant or somebody else. Is Hemant around? I'll actually get Hemant to answer this question in more detail for you. Just one last thing before I pass on. You showed a slide where the top 25 funds of the 25% of the private equity fund made 30% Yes. IRR, and the next one was 20, and the last one was 30. Yeah. So the top has made 30% over the past several years. Yes. And if we add dollar to rupee depreciation, which is 4% a year, which makes it 34% for the best companies. So having a hurdle rate of 30%, But isn't it? But much? you actually have to remember that's over a very large set of funds. And this was global statistics. India funds अगर आप देखें, मैं आपको बोल रहा हूँ, I don't want to over excite the audience. India, all performing India funds actually don't, in this space, don't talk about IRR. IRR तो मैं आपको बोल रहा हूँ. अगर आप इन सब जो काबिल फंड मैनेजर से आप बात करेंगे ना, they only talk in terms of multiples of invested capital. So you would have heard this. Most fund managers would tell you we are 3x, 4x, 5x. It far beats some of these IRRs. But I think I would not be being a responsible manager of a fund of fund strategy. I don't want to peg unreal returns. हुआ तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमको लगता है 40 पे it is fair game. It is deliverable without being over ambitious. Sorry. Some Hello. question. This is Amit Naik. Hi, Amit. I have a question regarding, you said that every individual should invest in the private equity space, right? Few months back, there was a call from the private broking firm to me. They were told me to invest in the unlisted space. I will not name a company, but they told me that you have to invest in 100 quantities, and the rate would be around 3,000. So it was something around 3 lakhs rupees, right? So I asked them 3 questions. Being in the private equity, it is not being listed on the NSE basis, it is unlisted, right? So there is a liquidity issue, right?
Then they told me the price. I asked them, what is the price discovery mechanism? What is the criteria? How do you discover the price? And thirdly, think if I want to get rid of my investment, so how do I square up my thing? And what is the trustworthiness? Like if I pay 3 lakhs rupees, what is the trustworthiness of my payment? How do I get my shares in my demat account? So could you just Sure. So दो चीजें सर. पहली बात, this is a clearly a very, and I think we can take a fair guess at even maybe the kind of companies you're talking about. These companies, even though they may not have listed, but very often have now had so many investors, right? I don't know which particular company, but I'm just hazarding a guess and responding in that context. हो सकता है कुछ कंपनीज की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई है कि पहली बात, most unlisted companies don't sell 100 shares, 200 shares. This is more like a listed company phenomenon. लेकिन ये unlisted company में लगता है इतने सारे shareholders हो गए हैं कि a secondary market has got created even without being listed. So that's the first thing, right? आपने जैसा बोला 100% उसका एक खुशी की बात यह है कि ये कंपनी बिना लिस्ट हुए ही already it has some liquidity in that sense, right? You may not get perfect pricing, but clearly there is a market for these shares. So that's the good news. You are absolutely right in saying it is hard unless you are very deep into it to assess कि ये आपको exactly correct price मिल रही है कि नहीं. और इस तरह के stocks में actually fair price क्या है, it's hard to guess because there is no one benchmark of price. आपने और मैंने एक ट्रेड किया और आपने और उन्होंने एक ट्रेड किया, मेरी प्राइस बेंचमार्क है कि आपकी प्राइस बेंचमार्क है, ये कहना मुश्किल है. I would suggest that if you should only engage in these things if the companies are of very high repute. So I can name a few companies where I think your trade looks perfectly fine, right? लेकिन don't do such trades in companies which are not very, very well known, and I really mean very, very well known. You can actually get stuck for liquidity and in fact make a poor investment if the companies are really not very high quality in this. Because like I said, there is no standard benchmark. And इसी से बचने के लिए सर, मैं actually फिर से मैं reiterate करूँगा, why put 3 lakhs like this when, and I know 1 crore is a bigger sum, but I would much rather say 1 crore सोचिए और इस तरह सोचिए कि 1 करोड़ में मैंने 100 कंपनी या 75 कंपनी में 1-1 लाख रुपए लगाए. You are actually better diversified. Diversification is a very big thing. है ना? 75 में 75 कंपनी खराब नहीं होगी, especially when they are being chosen by very high quality fund managers, जो दिन रात यही कोशिश कर रहे हैं कि कंपनी की क्वालिटी अच्छी हो. I don't know if that answers your question at all, but no, thank you. Please. Hello, sir. Meghna this side. जी. So generally investors. Sorry, Meghna, I cannot see you. Sorry. So generally investors have concerns around, as many of people here have pointed out, is that mostly these funds will have a longer tenure. And I completely take your point that the investors will start getting the money back after the 4th or 5th year. But the main concern is about the exit opportunities that maybe the funds had. That is something that obviously any fund manager cannot give clarity on. So from your experience, may I get your view on how do you think the exit opportunity landscape has panned out in India? Excellent question, Meghna. Thank you for asking it. एक चीज ध्यान रखिए, what you and I know, and right now let's talk about quality fund managers. Okay, so let's assume we have picked some of the best. These fund managers are extremely focused on exits. Extremely. मतलब वो जब assess करते हैं, a very large part, because they are very aware of what you are saying, their job is actually finally to return cash in my bank. No theory, no telling me how much MTM profit, वो सब ठीक है, लेकिन अंत में तो मैं पूछूंगा ना कि मेरे पास पैसे वापस मेरे बैंक पे कितने आए. So they are extremely focused, and therefore part of their investment analysis is determining. They don't just look at one. They make sure that most of these companies have the potential to exit in one or more manners. So if you see a typical investment committee note, it will say potential exits for what we are going to invest in could be 4 ways. 1, this company grows up and
does its own IPO. So the public market route. Two, we think this company, so like random, I'm taking a made up example. Suppose you are a small fashion company. So I could say, this is like Nykaa, but it has certain other niches. Like Nykaa, it could go ahead and IPO. That's one. We really like it. Second, it could get acquired by somebody like Nykaa. That could be an exit for me. Third, it could become consolidated with some larger play that we are doing. Right? Which is there are हमारे पोर्टफोलियो में 3 ऐसी कंपनीज हैं. हम उनको तीनों को मिला के एक बड़ी कंपनी बना सकते हैं. 4, we are a stage B to D fund. I think many pre-IPO funds will buy this company from us 4 years later. So there could be many others. So they actually chalk plan A, plan B, plan C, plan D. And that's why we like investing behind fund managers who have done this analysis. And please remember, they are also playing with very large capital. They are not deploying small amounts of capital. So there is very responsible behavior. आप 150 करोड़ या 200 करोड़ किसी कंपनी में लगा रहे हैं, 6 महीना जो आपका मैंने बोला ना 3 महीने से 6 महीना डिलीजेंस हो रहा है, वो इसी सब में हो रहा है. आप विश्वास नहीं करेंगे, सम ऑफ दीज फंड्स अगर आप उनको बोलिए कि मेरे पास 40 रिटेल आउटलेट्स हैं, सपोज, they take the trouble to sometimes go to each of those retail outlets. They will sit there for the whole day. They will see how much footsteps do you have, how many footfalls in the shop. So it's very detailed, which actually you and I sitting in our houses or offices cannot hope to do. That's why we like the sophistication. Sorry. I'm conscious of time maybe, but please, Sir Police. Can we have a mic here, please? How much time do we have, Devina? Please. We have 2 questions if you don't mind. We'll take those and then. Sorry, please. My name is Amit Gordon. Can I get a mic here? Yeah, hi, I'll just take it. Ji. Yeah, hi, I'm Bhavya. Very interesting presentation that you made. I have basically 2 questions. One is private equity valuation is very subjective. It's very, very subjective. So, how do your fund managers think about valuation, and do you disagree with them to some extent where they have to redo the work? So that's one. And second, you pointed out very interesting example of Nykaa, that if you had got on the bus 4 to 5 years back, but finding those companies and the strike rate to find those blockbuster IPOs or exits is very, very rare. It's like 1 in 100. So what's the strike rate that you are aiming to get out of it? Like out of 100 companies, what's the strike rate that you are aiming to get? Good. So let me answer your second question first. First of all, we choose fund managers in a manner where we know their track record of finding such companies is very good. एक चीज ध्यान रखिए, these fund managers are not startups. They have typically been investing for 7, 8, 10 years. They have seen a couple of investment and exit cycles, hopefully. And part of their big job is to find these blockbuster companies. That is all they do. They go around every day looking for high quality companies. Second thing which links into your and therefore the strike rate, series B to D में जो मैंने slide दिखाई ना, series B to D में मेरी उम्मीद है, पहली बात मेरी एक hypothesis है, B to D में आज से 5 साल बाद जितने IPOs आएंगे, 50 से 70% IPOs इस यूनिवर्स से आने वाले हैं. This whole services, technology, consumer fueled story in India. बट जो सीरीज बी डी का ये स्पेस है, इसमें मोर्टैलिटी रेट बहुत कम है. मतलब कंपनीज एकदम बंद हो जाए ये बहुत कम होता है, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी कम टू अ वेरी डेवलप्ड स्टेज. इवन इफ यू हिट 15 to 20%, and that's a very high ratio, even if 15 to 20% of your 100 companies, so to speak, turn blockbuster, you are actually in great place. And remember, every company doesn't have to become Nykaa. Nykaa is an extreme example. लेकिन कोई कंपनी 4000 करोड़, 8000 करोड़, 10,000 करोड़ की कंपनी, whether below billion or little above billion, these are tremendous outcomes, right? You would have made 15, 20x returns on these companies, and very often getting that right anyway gets your whole portfolio return okay. It kind of de-risks you. That was the first part. Second point on whether I disagree with fund managers and subjective valuations. देखिए एक चीज मैं फिर से बोलूंगा, please remember these fund managers are experts in their field. So we are like a double watch. Of course they are watching and then we are watching. We first of all only choose funds where we think the fund manager is
is making sensible calls, right? Because I have a choice of not choosing a fund if I don't like their strategy. So पहली बात first layer is कि वो बहुत experienced है, उसको सब कुछ अच्छा लग रहा है, and then I am or we are agreeing with his strategy. And therefore, I would disagree that the valuation is very subjective. Of course, there is a range. There is a range in listed markets also, right? कोई किसी चीज का भाव 1500 है कि 1700 है, हम रोज आर्ग्यू कर सकते हैं. लेकिन there is a range which is arrived at looking at global multiples, Indian multiples, past examples, transactions done, cash flow, DCF, all of that. So you kind of get into a sensible stage on it. And lastly, please, B और D में हमको बहुत ज़्यादा adventurous investing नहीं करनी है. I want to please say that. If I wanted to do adventurous, I would rather do seed stage and hope to make 70x return, because then the risk reward is fair. या तो मेरा पैसा डूबा या मेरे को सीधा मैं 50 टाइम 70 टाइम हो गया. We are trying to get this 40% IRR, which is a very lovely IRR at a gross level in the fund of fund strategy. So it should be a smooth, जो मैंने बोला large cap index fund जैसी experience होना चाहिए with high returns. Sorry, somebody else. Yes. Hi, my name is Amit Vardhan. My question is, since the unlisted universe is pretty small with respect to the listed universe, and the research stock would be, or research company would be even less. So the fund managers which you choose might have a overlapping of portfolios. How would you tend to reduce that? Excellent question. पहली चीज मैं बस request करूँगा, I would submit is, actually I think the unlisted universe is now growing at a far higher pace. So I would not agree. Research stocks, मैं research पे आ रहा हूँ. Research stock बहुत कम है, because research, institutional equities or institutional research in India does not cover unlisted stock, right? So you are absolutely right. But what? So पहला point है, unlisted companies की संख्या बहुत ज़्यादा है. दूसरा, while published research is not available, you will be quite impressed at what these fund managers and the funds write on these companies when they are doing diligence, whether they invest or they don't invest. So they are not allowed to invest without writing a real Bible on that company. आपको वो बनाना ही बनाना, इतने डिटेल में काम होना ही है. So that serves like a good research report. You and I don't have access to it, right? But if you are a fund investor, as a fund of funds, of course we are, as part of our diligence, we ask funds to show कि आप 2 कंपनी के डॉक्यूमेंट्स दिखाइए जिसमें आपने इन्वेस्ट किया, 2 ऐसी कंपनी दिखाइए जिसमें आपने रिसर्च की और इन्वेस्ट नहीं किया, बिकॉज हमें ये भी समझ आना चाहिए कि आप क्या चीज रिजेक्ट करते हैं. ओवरलैप की जहां तक बात है, हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं. आई डोंट वांट टू मच ओवरलैप. सो 5% 2% overlap is fine, that's okay. But we are also trying to bring the themes we like. So for example, every fund manager has some specialty. Somebody might be very good in consumer tech. Somebody might be really good in tech. You know, understanding things like defense equipment and drones. It's like pure tech or artificial intelligence or machine learning. Somebody might say, I really understand consumer tech. Somebody might understand, I like logistics and the whole play around India connectivity. These are different spaces. We like specialist fund managers. People who say कि यार हमको यही space अच्छा लगता है, हमको ये समझ आता है, and that automatically brings a sectoral diversification also and reduces overlap. Sir, my name is Sandesh. Budget 2023. Any contribution to our financial market? Okay, this is absolutely. I will have many things to say, but if you don't mind, can I answer your question more privately, because that will become a very long response, and I'm conscious I'd like my colleagues to come on. We actually think generally very positive. Lots of things happening, lots of changes. हमको जैसे बहुत सारी चीजें जो आपको जैसे गिफ्ट सिटी में जो हो रहा है, we find that quite exciting. I can talk about some of the broader themes that are happening, but at a macro level, I think we remain very positive. But I have many detailed comments to this, so if you don't mind, I'll answer that offline after this. Sorry, one last question really, and then we will please move on. Hello. This side Ashutosh. Hi, So Ashutosh. I have a question about the research and the valuation of the company. So like we already seen, those fund managers mainly rely on the basis of the research. I can say that the उनकी अपनी टीम बहुत रिसर्च करती है. वो रिलाय में उनका सबसे ज्यादा रिलायंस रहता है अपनी खुद की टीम पे.
क्योंकि कोई पब्लिक, जैसे अगर मान लीजिए आपको स्विगी में इन्वेस्ट करना होता, अभी नहीं, आज से 5 साल पहले, स्विगी पे कोई रिसर्च रिपोर्ट तो लिख नहीं रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड है स्विगी में रिपोर्ट लिखने, इन्वेस्ट करने में, तो आप पहले अपनी टीम बिठाएंगे, एक टीम पूरा लीगल समझेगी, एक पूरा फाइनेंशियल डेटा, एक उनका सारा बिजनेस समझेगी, व्हाट इज बिजनेस प्लान स्ट्रेटजी, somebody will understand their customers, then they will get client feedback, they will ask prior investors कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है इस एंटरप्रेन्योर के साथ। तो वो लोग बहुत 360 डिग्री डिलिजेंस करते हैं एंड देन दे प्रिपेयर देयर ओन रिपोर्ट। सो जो अंडरराइटर होते हैं, सो बेस्ड ऑन उनके डेटाबेसिस पे आप कंप्लीट रिलाई कर रहे हैं, लाइक वी कैन से दैट ट्रैक्शन के डेटा हो गए, फेसबुक के डेटा बेस हो गए, so you are relying for the financial database on contrary basis on that, or you are doing direct company database? Because direct जो फंड है वो ट्रैक्शन वगैरह तो एक्चुअली बहुत ही मतलब वो लोग बहुत अच्छे डेटाबेसेस हैं, लेकिन कंपेयर्ड टू द डायरेक्ट रिसर्च दे आर वेरी लाइट। सारी इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट इंफॉर्मेशन पे ही होती है। कोई थर्ड, क्योंकि मैं पैसा, अगर मैं आपकी कंपनी में पैसा, अगर मैं फंड मैनेजर हूँ, मैं आपकी कंपनी में पैसा लगाने जा रहा हूँ, मैं किसी तीसरे व्यक्ति से पूछने ही नहीं वाला हूँ। मैं पहले बोलूंगा आप पूरा कच्चा चिट्ठा मुझे दिखाइए, आपने क्या किया, वो एक एक नंबर में चेक करूंगा, फिर ही मैं पैसा लगाऊंगा। सो ओनली डायरेक्ट। So during the underwriting process, these things are already seen that कि जब उनको फंड रेजिंग का जरूरत होता है तो कंपनी की अगर वैल्यूएशन 1 CR है तो they are showing their valuation to the 50 CR and 100 CR. So how you are tackling these issues? So in most of these cases there may not be, जो आप अंडरराइटर या मर्चेंट बैंकर आई थिंक आप रेफर कर रहे हैं, बहुत सारे केसेस में ये अनलिस्टेड मार्केट है। Some lots of funds will say they don't rely on what the merchant banker is saying. The company may not have a merchant banker also. देखिए merchant banker वाला phenomenon listed companies में ज्यादा आता है या pre-IPO late stage में ज्यादा आता है। इस stage में that company is growing, it is doing a series B, very often it will not have any merchant banker. It would have, chances are directly been interacting with the fund. Thank you. Right? Thank you so much. I'm very sorry I've taken up too much time. Maybe I'll hand it back to Devina, and I'm very happy to take any questions after this. Thank you. Thank you, Varun. Indeed, a very insightful session, and I must say both very evergreen opportunities here, private credit and private equity. Will not take much time. In fact, just a small address from our founder and chairman, Mr. Nitin Jain, just to address this august audience right now. Nitin, if we could have you on stage, please. Just to talk a little bit about the vision of Neo and what we aim to accomplish here in the next foreseeable future. Hi everyone, wish you all an awesome new year. I think it's a little late but nevertheless. और आप लोगों में से काफ़ी लोगों से शायद मैं पहले मिल चुका हूँ, काफ़ी लोगों से पहली बार मिल रहा हूँ, तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द न्यू ग्रुप। थैंक यू। और अभी शायद आपके डिनर और आपके बीच में मैं खड़ा हूँ, तो आई एम होपिंग कि आई गेट दिस डन वेरी क्विकली। आई एम आल्सो हंग्री, बट टू वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सेशंस एंड वरुण एंड हेमंत एंड अ लार्ज पार्ट ऑफ दिस टीम, द फाउंडिंग टीम, एक्चुअली हम लोग कम से कम तो 15-20 सालों से दोस्त हैं, तो इट्स बीन सच अ फैंटास्टिक जर्नी। और देविना ने मुझे इंस्ट्रक्ट किया था कि आई थिंक यू शुड शेयर कि आपने न्यू क्यों शुरू किया, और मैं उसको ये बता रहा था कि मैंने हर चीज़ अपनी लाइफ में थोड़ी सी लेट की है। तो एट द एज ऑफ 45 आई डिसाइडेड टू बी लाइक यू गाइस। मोस्ट ऑफ यू हियर आर एंटरप्रेन्योर्स, राइट? आप सब लोग, और हमारे घर में तो ऐसा था कि जब बड़े हो रहे थे ना, तो यही था हमेशा कि मैं लखनऊ से हूँ, वरुण इज ऑल्सो फ्रॉम लखनऊ, आई एम फ्रॉम लखनऊ। तो लखनऊ में पेरेंट्स अपने बच्चों से क्या बोलते हैं जब वो बड़ा होता है, क्या बनोगे? एक ही चीज होती है, IAS IPS। इसके सिवा, बिकॉज मेरे पेरेंट्स को या मेरी मदर को इन दिस पर्टिकुलर केस हमेशा लाल बत्ती का बहुत शौक था कि आई नीड अ कार विद a lot of you guys here might not be able to relate it, but if you are from north, any people from north here, I'm sure you guys would know that, right? So उनके लिए तो बड़ा शौक था कि मैं इंजीनियरिंग करने IIT गया, फिर IIM गया, तो क्या बेटा इतना पढ़ लिख के, बट फाइनली
one thing that really caught my attention when I was studying engineering के time पे actually my father was slightly different and वो बहुत ही early stage से investing करते थे stock market में. और मुझे बड़ी कमाल की चीज लगती थी जब पढ़ाई कर रहा था कि एक ही चीज की रोज वैल्यू कैसे बदलती है. मतलब मेरे ख्याल से स्टॉक अकेली चीज है. मतलब अगर आप फ्रिज खरीदते हैं तो उतने का होता है, कल पूछने जाओ तो फ्रिज कितने का था, आज पूछना हो तो उतने का ही है. आप कार खरीदते तो भी ऐसे ही होता है. बट स्टॉक मार्केट ऐसी चीज है कि कल वो 3800 का था और 5 दिन के बाद वो 1600 का है. और अभी भी नहीं पता है कि वो 3800 जा रहा है कि 800 जा रहा है. इट्स अबाउट योर परसेप्शन. आपको क्या लगता है ना? इट फैसिनेटेड मी. मेरे लिए वो बहुत ही जबरदस्त चीज थी. मुझे लगा कोई चीज इतना हेल्दी है ना तो उसे पैसा तो बनाया जा सकता होगा. क्या तरीका तो बहुत ही आसान है. जब नीचे हो तो खरीद लो, जब ऊपर हो तो बेच लो. सो दैट इज हाउ आई स्टार्टेड माय इन्वेस्टिंग जर्नी. और मैंने जो पहला जॉब किया वो इंजीनियरिंग का जॉब था. तो दिन में काम करता था और थोड़ा थोड़ा एक इंडिया बुल्स तब सबसे फेमस ऑनलाइन अकाउंट थे. मैं 99-2000 की बात कर रहा हूँ. They were probably the only online brokers if I'm not mistaken उस टाइम पे. और बीच में टाइम निकाल के ना वो आप जाते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या करते हैं. यहाँ पे आप लोगों को शायद इतना अंदाजा नहीं होगा बट काफी मेहनत करते हैं. तो बीच में टाइम निकाल के इंडिया बुल्स में जाके मैं स्टॉक खरीदता था. और मैं पता कौन से स्टॉक खरीदे थे मुझे तो याद सारे थे. एक था पेंटर मीडिया ग्राफिक्स. हाँ वो स्टॉक कभी होता था 1500 का और वो हो गया 15 रुपए का. तो मैंने कहा जो चीज कल 1500 की थी आज 15 में मिल रही है तो पक्का इसमें तो पैसा बनेगा. पर मुझे तो 30 ही होना है. लॉजिक तो है ना कि 1500 की चीज 15 में हो गई. किसी ने तो 1500 में खरीदी, मैं 15 में खरीदा. फिर कोई तो मुझसे खरीदने आएगा 30 पे, मेरा पैसा डबल. एक बार 15 का प्राइस ही नहीं क्रॉस किया. 15 के बाद मैंने वो स्टॉक शायद आज तक मेरे डीमैट में पड़ा हो. वो मतलब कभी हर रोज ज्यादा 1 रुपए नीचे, 50% नीचे, थोड़ा तो नीचे. आई थिंक पूरे साल में मैंने कंपनी को 10 इन्वेस्टमेंट किए हुए और सारे के सारे लॉस. और सबसे कमाल चीज पता है क्या थी? इंडेक्स बोल रहा था कि ऊपर है तो मार्केट ऊपर था और मेरा पोर्टफोलियो पहले साल में जब मैंने इन्वेस्टिंग शुरू की 50-60% डाउन. और मैंने किसी को नहीं बताया. मैं रात में दोस्तों को ना घर में मदर की. और सबको लगता था कि ये तो लड़का बड़ा इंटेलिजेंट है, IIT से है, हाँ वहाँ भी अच्छा रैंक लेके आया. और मुझे भी लगता था कि यार इतनी पढ़ाई की हर जगह टॉप किया है तो स्टॉक मार्केट कैसे डिफिकल्ट हो सकता है. और मुझे फिर बाद में ये समझ में आया कि स्टॉक मार्केट में बहुत पढ़ाई करना बहुत नुकसानदायक है. जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं ना सबसे कम पैसा बनाते हैं. स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा धीरे धीरे मतलब इट्स बीन अ जर्नी ऑफ 20-22 इयर्स नाउ. मुझे लगा कि स्टॉक मार्केट बहुत ही सिंपल चीज है लेकिन आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी, आपका कन्विक्शन और आपकी डिसाइसिवनेस इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर एनालिसिस एंड रिगर. जैसे वरुण ने बोला ना शुरू में कि कोई अच्छी चीज है ना आप सोचते रहते हैं क्यों अच्छी है, सब खरीद रहे हैं तो अच्छी नहीं होगी या सब खरीद रहे हैं तो अच्छी होगी. इतना कॉम्प्लिकेटेड. बट कई बार इन्वेस्टिंग इज फार सिंपलर एंड येट फार मोर डिफिकल्ट. बट 2003 में मुझे फाइनली एक कंपनी में ज्वाइन करने का मौका मिला. जब मैंने IIM कैलकाटा से मैं पढ़ाई करके निकला था पहले मैंने अपना करियर शुरू किया टाटाज में. सो आई वाज विद स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग कंपनी पर TSMG. उनकी ऐसी कंपनी है जो सारी टाटा की कंपनीज को एडवाइस करती है कैसे बिजनेस में आगे जाना. लेकिन मुझे वहाँ समझ में आ गया था कि ये कंसल्टिंग मेरे बस का नहीं आई. हर रोज बैठ के पावर पॉइंट बना रहे, एक्सेल बना रहे, बड़ा मुश्किल था. तो मुझे मौका मिला एक कंपनी में. कंपनी का नाम था एडलवाइस. अभी तो आप सब लोगों को लगता है एडलवाइस नोन कंपनी है. जब मैंने ज्वाइन किया था तो 40 लोग थे और कंपनी के अंदर 40 लोग की नेटवर्क थी. और उस वक्त जेन्युइनली ना मुझे एडलवाइस प्रोनाउंस करना भी नहीं आता था. तो ऐसे जब लोग पूछते ना एडल करके ऐसे करके बात कर रहे. बट बहुत ही शानदार कंपनी, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी. उन्होंने मुझे मौका दिया फ्रैंकली टू स्टार्ट माय करियर इन ट्रेडिंग.
दैट इज अमेजिंग। 2003 की बात करो ना, तो आई स्टार्टेड माय करियर एक्चुअली एज अ ऑप्शन ट्रेडर। आप लोगों में से बहुत ही कम लोग होंगे जो शायद ऑप्शन ट्रेडिंग में इन्वॉल्व होंगे, और जिसको ये बोलता ना मैं ऑप्शन ट्रेडर तो उसको लगता है कि एकदम सटोरी आदमी है ये तो, बट ऐसा नहीं है। मैं बहुत सोच समझ के करता हूँ, आपको बताया मैं अच्छी सोच समझ के करता हूँ। तो उसमें करियर शुरू किया। वी वर वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट मेकर। 2008 तक काफी अच्छा परफॉर्मेंस हो गया था, एंड द फर्म स्टार्टेड टू डू वेरी वेल। 2007 में हमारा आईपीओ उस कंपनी का। मेरे सामने वो ग्रोथ हुई ना, मैंने देखा उसको कि कैसे 40 लोगों की कंपनी 10,000 लोगों की कंपनी बनी, और शायद से मेरा भी हमारी टीम का भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन था। तो वहाँ पे मैंने वेल्थ मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट, एआरसी और जो हमारा म्यूचुअल फंड था, जो ब्रोकिंग फर्म था, ये सारे बिजनेसेस मेरे को रिपोर्ट करते थे। और आई बीन प्रिविलेज्ड टू वर्क विद सम एक्सेप्शनल पीपल। हाँ, तो पेंटर मीडिया से मुझे याद आया कि एक जो चीज़ शायद मैंने उसके बाद ध्यान लगाया स्टॉक मार्केट में, स्टॉक पिकिंग में। आई थिंक आई बिकेम अ गुड ऑप्शन ट्रेडर। तो स्टॉक पिकिंग में मुझे एक चीज़ समझ आई कि स्टॉक पिक करने से अच्छा है ना, ऐसे लोग पिक करो जो अच्छे स्टॉक पिक करते। हाँ, तो फिर मैंने अपनी लिस्ट में ना 3-4 लोग बना लिए, उनमें से एक यहाँ बैठा हुआ है, ये पुनीत जैन। 2000 में मेरे साथ काम करता था जिस पहली कंपनी में, वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक पिकर्स इन द कंट्री। हाँ, और ऐसे बैठे बैठे बोल रहे कि यार ये नहीं जैसा, लेकिन मुझे लगता है मैंने इसके स्टॉक पिकिंग पे इससे ज्यादा पैसे बनाए। हाँ, बिकॉज आई हैव सो मच कन्विक्शन ऑन हिम दैट मुझे हमेशा लगता है कि वो बोल रहा है ना तो सही बोल रहा होगा। ऐसे जो वरुण बोल रहा था ना कि जो फंड मैनेजर्स हैं, तो अ लॉट ऑफ टाइम्स योर स्किल इज नॉट अबाउट आइडेंटिफाइंग द अंडरलाइंग कंपनी। हम नहीं कर सकते क्योंकि इतनी सारी, और हम कितने काम करेंगे। बट ये अप्रोच बहुत ही सिंपल है कि यार अच्छे लोग ढूंढो और उनकी लाइफ है ना बहुत वैल्यू एड मत करो। अगर वो काबिल है, उसने 10-15 साल अपने आप को प्रूव किया है, तो उसके साथ काम करेंगे ना यार। और एक क्वेश्चन शायद आप लोगों में से किसी ने पूछा था कि 10 साल 12 साल का इन्वेस्टमेंट, मेरे ख्याल से बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है। लेकिन मेरा एक एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूँ। मेरे जितने भी जानने वाले हैं जिन्होंने बहुत पैसा कमाया, आपके जितने भी जानने वाले जिन्होंने बहुत पैसा कमाया, ज्यादातर पैसा कहाँ कमाया गया? बिजनेस को एक बार छोड़ दीजिए, बिजनेस में तो आप 20-20 साल लगे रहते हैं। इट इज द मोस्ट इलिक्विड इन्वेस्टमेंट दैट यू कैन मेक। आप जो अपना बिजनेस बनाता है, जो भी प्रमोटर, वो तो बेचारा 25 साल तक उसको एग्जिट नहीं है। एक बार बिजनेस को भी छोड़ दिए तो सबसे बड़ा पैसा लोगों ने कहाँ बनाया? हाँ, रियल एस्टेट। और रियल एस्टेट में कहाँ बनाया? जमीन में। आप सोच के देखो, सबसे बड़ा पैसा आप, ये 500 करोड़ का आदमी है, अगर वो 500 करोड़ का आदमी है ना और उसका खुद का बिजनेस नहीं है, तो चांसेस आर 400 करोड़ तो जमीन बनाया होगा, है कि नहीं है? तो जमीन में लिक्विडिटी का है। आप उसको खरीद के 3 दिन के बाद बेच सकते हो क्या? अगर उसने बेचा हो तब कि यार 30% आयरा ट्रैक हो गई है, बेच देते हैं, तो पैसा बन सकता था क्या? जितने यार, आई हैव मैनेज अ लॉट ऑफ मनी। हम लोग पीक पे 3 लाख करोड़ मैनेज करते थे। मैंने जितने भी अमीर लोग देखे, सीरियसली अमीर लोग, उनमें कभी कोई आईआरआर की बात ही नहीं होती। ये आईआरआर तो हम जैसे लोगों का गिफ्ट है टू द मार्केट। जो पढ़े लिखे लोग आ जाते हैं, ध्यान देते लोगों को कि ये आईआरआर क्या होता है। आईआरआर अगर मैं किसी एक अच्छे बैंकर से पूछूं ना, आईआरआर समझा दूं मेरे को, गारंटी देता हूं, ज्यादातर लोग नहीं बताते आईआरआर होता क्या है। 100% नहीं, लेकिन 20% लोग तो नहीं समझा सकते जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज में। जो बड़ा आदमी है ना, वो पता है कि मैंने 100 रुपये लगाया, 500 हो गया, 100 लगाया 500 हुआ। अब आप उसकी आईआरआर कैलकुलेट करते हो। मैंने 500 लगाया, 5000 हो गया, उसको टाइम देना पड़ता। Anyways, I think I wanted to address that. But 2020-21 में I was able to sell part of our company। तो मैंने जो वेल्थ और एसेट मैनेजमेंट बिजनेस बनाया था, उसमें से आधा किया उसको, और आधी कंपनी को हमने पीएचई को बेचा। इट वाज गुड डील कोविड के बीच में, क्योंकि हमारी कंपनी जो पेरेंट कंपनी थी उसको पैसे की जरूरत थी।
बहुत ही अच्छी डील थी, बहुत ही अच्छी कंपनी है KG, ग्लोबली बहुत बड़े प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर हैं। सो वी सोल्ड द कंपनी अराउंड 5,000 crores में। उस वक्त मुझे लगा कि यार ये पूरी जर्नी खत्म हो गया, कि शुरू की कंपनी को बड़ा किया, बेच दिया, मुझे लगा अब शायद टाइम आ गया है कुछ नया अपने लिए करने का। तो दो मेरे कारण बहुत इम्पोर्टेंट थे उसमें। एक, मुझे लगा कि यार ये इंडिया का टाइम आ गया। मेरा ऐसा मानना है कि अभी अगले जो 10 साल है मेरी जिंदगी के बेस्ट 10 साल होने वाले हैं, ना इससे पहले ना इसके बाद। दिस इज इंडिया ऑफ, जो यूएस में 1980s था ना, अगर आप लोग में से कुछ हिस्ट्री फॉलो करते हो स्टॉक मार्केट्स की, तो आपको रियलाइज होगा जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स 1980 से लेके मिड 1990s तक यूएस में था, वी आर गोइंग टू एग्जैक्टली दैट स्टेज। दूसरा, मतलब कभी कभी प्रॉब्लम भी अपॉर्चुनिटी होती है ना, और मुझे लगता है कि 2010 से 2020 ना, इट वाज अ लॉस्ट डिकेड। अगर आप सोचिए 2010 से 2020 के बीच में हमने सारी अपॉर्चुनिटी छोड़ी, लेकिन 2-3 बहुत अच्छे काम कर दिए, रिफॉर्म्स बहुत। और रिफॉर्म का मतलब क्या होता है? एक्चुअली रिफॉर्म का मतलब होता है कि बिजनेस को नए तरीके से काम करना सीखना पड़ता। लिक्विडिटी को हमने बहुत टाइट रखी, बहुत। अभी हम लोग बिकॉज वी आर इन अ गुड फेज, वी डोंट रिमेंबर दोस डार्क डेज ऑफ 2013-14। आप में से कुछ लोग तो काफी यंग हैं, बट 2012, 13, 14 के जो वो डार्क डेज थे, देन व्हेन यू आर गोइंग थ्रू कोविड, इवन द गुड डेज वर नॉट वेरी गुड। हमेशा लगता था यार सही जगह है हम लोग, यार इंडिया में रहना चाहिए था, नहीं रहना चाहिए था, कहीं बाहर जाते थे। अपने तो सारे दोस्त लोग बाहर पढ़ाई करते हैं, पेरेंट्स से कोई पूछा, मैं तो बोला था। लेकिन चीजें बदल गई ड्रामेटिकली। आई ट्रैवल अ लॉट, बहुत ट्रैवल करता हूँ। मिडिल ईस्ट मेरा काफी जाना होता है। मिडिल ईस्ट इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज वो एक स्ट्रेंज जगह है जहाँ मैं 2012 से जा रहा हूँ, अबू धाबी, दुबई और ये सब जगह। जब भी गया हूँ, एक तो वो जो इमिग्रेशन होता है ना, आप इंडियन है ना, चाहे आप कैसा भी कपड़ा पहने हो, इंडियन है ना, तो वो जो आदमी इमिग्रेशन में होता था, ऐसे देख के पूछता था कि तुम यहाँ आए क्यों? मतलब बोलेगा नहीं, बट उसकी आंखों में मुझे हमेशा ऐसा लगता था ये पूछ रहा है क्यों आया तुम यहाँ? ये पिछले साल गया, मतलब आई थिंक नवंबर में गया था। आई वॉज अमेज्ड बाय द, इतने प्यार से मुझे इनवाइट कर रहे हैं दुबई में। मुझे लगा ये क्या है, इज इट द सेम प्लेस? 2 साल के बाद मुझे बहुत फर्क लगा। वहाँ पे जब मैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से मिला, जैसे हेमंत ने बात की थी आडिया की, एंड सम ऑफ दीस बिग इन्वेस्टर्स ग्लोबली, दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में ही, everybody said there are only 2 places to invest, US and India. इंडिया का हमेशा कंपैरिजन होता था चाइना से। इस बार किसी ने नहीं बोला, किसी ने नहीं बोला। I was like, I don't know whether you guys realize it, but it is such a big transformation for me because जहां भी हमने बहुत कैपिटल ग्लोबली रेज किया in my previous business, हमेशा my biggest challenge was to convince people कि चाइना तो इतना दौड़ गया, आप लोग इतने पीछे हो, कैसे होगा? इस बार तो वो लोग मुझे समझा रहे हैं कि नितिन why we should invest in India. It was amazing. तो मेरा फर्स्ट रीजन ये बहुत बड़ा है, मुझे लगता है इंडिया अगले 10 साल के लिए हमारी लाइफ टाइम की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। डू नॉट मिस द अनमिसेबल। जो चीज छोड़नी नहीं चाहिए प्लीज, मतलब आपको जो रिस्क लेना है लाइफ में मेरे को लगता है लेना चाहिए अगले 10 साल बहुत। दूसरा मुझे लगता था फाइनेंशियल सर्विसेज मेरी एक जो लर्निंग रही, जो मैं इस ऑडियंस के लिए पर्टिकुलरली बोलना चाहता हूँ। मुझे महसूस हुआ, हालांकि मैंने कोशिश की अपने पुराने जॉब में, पुराने करियर में उसको बदलने की, बट पूरी तरह नहीं बदल पाया। वो ये था कि फॉर सम रीजन कंपनीज फोर्स पीपल टू डू थिंग्स व्हिच आर वेरी शॉर्ट टर्म इन नेचर, जो हमेशा क्लाइंट के लिए अच्छी नहीं होती। तो मेरा एक एक्सपीरियंस था 2012-13 में, जब मैं वेल्थ हेड कर रहा कि मेरे को एक क्लाइंट की ईमेल आई थी कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ।
And it was just a very random email. It just कैसे आया मुझे भी नहीं पता. उन्होंने किसी से बात करके मेरा ईमेल वगैरह ढूंढा होगा, बट मैं कभी नहीं मिला उनसे. तो वो कॉल में मुझे उन्होंने बताया कि मेरे को आपकी टीम ने, मेरी टीम ने एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बेची. एंड शी वाज अ विडो. उनके हस्बैंड की डेथ 4-6 महीने पहले हुई होगी, और उसके बाद उनको हमारी टीम ने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बेची. और उनको ये बताया था कि उनको पहले उनको टर्म पॉलिसी थी, उसका उनको पैसा आया था कुछ, अभी मुझे नंबर नहीं आता, 25-30 लाख हो गया, 40 लाख ऐसा कुछ नंबर था. और हमारे टीम मेंबर ने एक ने उनको बोला कि आप ये जो पॉलिसी है इसमें आपको एक ही बार इन्वेस्ट करना है, जबकि सारी पॉलिसी जो उस वक्त हुआ करती थी हमारी, उसमें हर साल आपको उतना पैसा इन्वेस्ट करना होता था. और उनको आपने बोला कि इसमें आप डाल दीजिए, 12-13 रिटर्न आपको मिलता रहेगा. I heard that conversation, was extremely disappointed. Like, it is heartbreaking, right? कि हम लोग बचपन से जब बड़े होते हैं तो अपनी पर्सनल लाइफ में हमेशा अच्छा करना चाहते हैं दूसरों के लिए. You want to do good. Why would you do something like this in your professional capacity? क्यों आप ऐसा करेंगे किसी के लिए ताकि आपका इस क्वार्टर का बोनस बन जाए? तो मुझे ये काफी गलत लगा, और मैंने उसके बारे में जब सोचा तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि शायद वो लड़का खुद अपने के लिए तो नहीं कर रहा. वो तो इसलिए कर रहा है बिकॉज कंपनी का बॉस जो है ना उसका, वो उसके पीछे पड़ा कि अगर तूने नहीं किया, इतना नंबर नहीं दिया, तो मैं तेरे को नौकरी से निकाल दूंगा. तो वो ही इज ट्राइंग टू सेव हिज जॉब. तो मुझे लगता है ये इंसेंटिव स्ट्रक्चर ना बहुत ही खराब हो जाता है कभी कभी कंपनीज के अंदर, कि आप सिर्फ 3 महीने में आपने कितना बिजनेस किया इसके ऊपर अपने लोगों को जज कर रहे हो. ये बड़ा अजीब सा कॉन्ट्रैक्ट है. लेकिन इसी पूरी जर्नी में ना मुझे एक रियलाइजेशन हुआ कि आप जो लोग हैं ना, जो इंडिपेंडेंट है, इसमें से 99% ना कभी ऐसा नहीं करेंगे. कभी नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि आपकी जॉब ना, आपको कोई कंपनी पैसा नहीं देती. आपका जो पैसा आता है ना, वो कौन देता है आपको? क्लाइंट. इट इज अ वेरी बिग डिफरेंस कि जो इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर्स है ना, उनको उनका जो रिलेशनशिप है अपने क्लाइंट के साथ, वो ट्रस्ट का है, विश्वास का है. आप उसको तकलीफ नहीं देख सकते. लेकिन जो बैंक में काम करता है किसी, जब वो उससे जाके मिलता है तो वो उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह से देखता है. उसके लिए क्लाइंट एक अपॉर्चुनिटी है, आपके लिए वो रिश्ता है. ये, और तब से हमने इस बारे में बहुत सोचा. हमारा जो म्यूचुअल फंड था उसमें भी हमने बहुत कोशिश की कि हम कैसे डेवलप करें इंडिपेंडेंट एडवाइजर्स को. और यहाँ पे भी हमारा यही कमिटमेंट है कि हम वो करना चाहते हैं जिससे आपको आपके बिजनेस बढ़ाने में हेल्प, जिस भी तरह से हो. हम आज इस बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर पाएंगे शायद, लेकिन यू शुड ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं. और आपका हमारे लिए इनपुट विल बी वेरी वैल्यूएबल. अगर आप बता सकें हमें और क्या कर सकते हैं. हमारी पहली कोशिश ये थी कि जो कई बार आप लोग महसूस करेंगे कि जो हमारे टॉप टियर क्लाइंट्स हैं, उन पे बहुत ज़्यादा अटैक है फ्रॉम द प्राइवेट वेल्थ आउटफिट्स, बैंक के थ्रू. और धीरे धीरे उनको लगता है कि ये सारे प्रोडक्ट्स हमें बैंक्स दिखाते हैं, प्राइवेट वेल्थ आउटफिट्स दिखाते हैं, आपको दिखाते नहीं. तो हम कोशिश ये करें, हमारी ये छोटी सी कोशिश है कि हम किस तरह से आपके साथ इस पर बात कर सकें, अपना पर्सपेक्टिव दे सकें आपको, एंड मेक अवेलेबल द बेस्ट इन द बेस्ट. ये मेरा प्रॉमिस है कि अगर हमने प्रोडक्ट लेके आए तो क्वालिटी वाइज इट विल बी द बेस्ट. आपको जितना इसके बारे में बात करनी हम लोग अलग से बात कर सकते हैं. अगर बेस्ट नहीं कर सकते ना तो मत लॉन्च करो. सिंपल अप्रोच है. सो with that, thank you so much for coming over. It's such a pleasure. Look forward to building a very, very deep and long-term relationship with all of you. Thank you. Devina? But I'm sure you guys have had very insightful take-backs from both these unique presentations made by Hemant as well as Varun. And obviously the team is here. You can engage with them offline. We're open for dinner, so please help yourself. And thank you very much for joining us this evening. It was great having you all here. Thank you so much.